So we welcome you all to the second game of the night between the Gladiators and the Dynamites. The Gladiators have won the toss and they've elected to field first. They are putting the Dynamites into bat. Dynamites probably one of the strongest teams in the Premier League this year, but Damir, that is just my observation. Well, yes, on paper they are very strong, but we've seen in the past that the teams which are on paper very strong tend to lose the games. So we're in for a good game once again because the Legends are also not weak. They are a very good team as well. Yeah, Wes Khan has certainly added some experience this time around in Noor Dastagir and Kaleem Mazhar as well. So they have some depth to the lineup this time around, and Ismail Butt as well. Also, this matchup between Kaleem Mazhar and Wasim Abbas Murli could be really good for the ultimate spinner of this circuit. Yeah, and Mohammad Khan is the usual pick that Awaz goes for on most occasions. He's a tight, fast bowler, likes to bring the ball back in with the new ball. He's got the experience. So we will have to see if he can keep things tight in front of Arif Zafar. Yet another good delivery by Mohammad Khan. So far so good for the fast bowler. Just giving away 2 runs in his 3 deliveries. Yeah, Hassan Ali Khalid is another explosive batsman, and he can obviously, if he gets going, he can certainly smash the ball around exactly like what Nosher did for Avengers. So I think the Gladiators will certainly need to restrict the Dynamites at something around 150 to 160 if they want to give themselves a chance against this strong Dynamites team. A good shot towards the offside. They sliced that a little bit, wanted to play it a bit squarer, but played it a bit fine towards the fielder. A bit awkward by the batsman, but for some reason the ball was connected well. I couldn't find the placement there. So a tight over so far. Yeah, just 3 runs going in for his last delivery of the over. Played towards the offside. I don't think it will be much more than a single. Yes, Arif Zafar has been given the license by Umar Dogar. I think that's primarily the reason that he's opening, because every run that he scores is pretty much, a bonus run because of considering the form that he's in. He's not so great, but if he gets going, well, obviously he can cause a lot of damage. I think that's the captaincy that Umar Dogar brings to the fold. He's just giving his players with the lesser confidence the full go out there, in order to gain the form and the confidence for this tournament. Honestly, by the way, for me, Umar Dogar is like the best captain a team can have. Also, watching them play last year, he's always very cool. He's always trying not to pressure his own teams, his own teammates. So Umar Dogar always plays a vital part. If he's not batting or bowling well, he's always there in their heads and he's always there giving them confidence. Yeah, for sure. I mean, someone like Arif Zafar, who's not in the best of touch lately, but Umar Dogar decides to send him as an opener and asks him to just go after it and score as many as he can. If he starts hitting them, finding the middle of the bat here, I think it'll help the team a great deal moving forward in this tournament. A good start by the Gladiators so far, just giving away 4 runs in the first over, and Mohammad Azhar Sharif is the bowler coming in. Bowls towards the offside, sticking to his line and nudged for a single. A slow start by the Dynamites. Yeah, I think they'll pretty much try to follow, the same pattern that the Knight Riders play themselves in, and then obviously go after the bowling wherever they can. And that's a beautiful shot over the fielder's head. Goes out of the ground. Big 6 by Hassan Ali Khalid. Well, that is the first 6 over covers by a left-hander, and he's obviously displaying his range out there early in this game. Asad Sharif now runs in for his 3rd delivery towards the leg side, picked by Hassan Ali
Yasser Ali Khalid crosses the boundary with ease and additional 4 to the scoreboard. Yes, Hassan Ali Khalid is someone who can take this bowling lineup apart. He is one of the very good picks by Umar Dogar, obviously, because he knows him well. He travelled with them to Malaysia as well for their LMS tours, and he's certainly someone who likes to play his shots. Asad Sharif running in again. A slower one this time, played towards the mid-off region. Fielder is there to cover that one. Just a single. Yeah, I think it was relatively too slow for my liking, but a good area where he pitched it. And just to put some things into perspective, Hassan Ali Khalid has an LMS average of 46.5 with a strike rate of 188. That was smashed back towards the bowler. I should have held on to that, but that is a spilled chance, I would say. That's the second over done. Asad Sharif giving away 12 runs. Dynamites are 16 for 0 after 2 overs. So Dynamites will certainly try to find those loose deliveries from here onwards and get 2 or 3 boundaries in every over. They've got a huge batting lineup. I think guys up till number 7 can certainly bat. On paper, I think a team that can compete with KR. Yeah, I mean, Umar Dogar is always very smart in the auctions. He just picks his players. He's always, done the homework. He's got his facts in place, his figures in place when he walks into an auction. Mohammad Khan starts off well with a dot ball to Hassan Ali Khalid, who is looking to go big yet again. Another good delivery and good running between the wickets. Hassan Ali Khalid wanted the second overthrow, and they will get the second run here. So not too bad from either side once again. So we will have to see how many the Dynamites put on the board. They certainly have the capacity to put something above 200, even on this wicket. And after watching the first game, I think that 180 is like a very good total here. Yeah, I think 170, 180 is certainly par. Mohammad Khan is amping it up now. He's bringing in the pace, and he's certainly asking a few questions of Hassan Ali Khalid. Big appeal as well there. A good take by Dr. Noor as well. Mohammad Khan runs in again for his last delivery. Another good one. Inside edge, unlucky for the bowler. That was a beautiful delivery. It was a Yorker, but French cut inside edge. 4 runs to Hassan Ali Khalid. Unlucky. So meanwhile, in the other game, it's brother versus brother. It's Faraz Mirza versus Afar Raza. Damir and Hurricanes looking on top so far. Hurricanes, I think, had a sensational auction. Getting Afar Raza and Mia Manan in the same team. Commendable job by Fahad Abdullah Sheikh. So Hassan Ali Khalid in the meanwhile certainly working his way towards a big innings here. He's certainly someone who can play those big shots. Another good over by Mohammad Khan. Ends his second over, giving away 11 runs in his 2 so far. Asad Sharif is being brought back on. So Asad Sharif will be bowling to Hassan Ali Khalid. He runs in.
And Hassan Ali Khalid steps out and tries to hoink that over deep mid wicket. Probably wanted to hit that into the residential area somewhere, Damir, but We saw one from Nasher Ali as well. So why not? And I'm sure we'll see one in this game as well. that was a good delivery once again with that bat lift of Hassan Ali Khalid. I think good choice of deliveries by Asad Sharif, trying to bowl full and trying to get through the defenses there. Very good start for the Gladiators because they are making the batsmen struggle and trying to go for the ball, not giving away any easy shots. So Sharif runs in again for his third delivery. Hassan Ali Khalid with a big swing. I think Hassan Ali Khalid is trying to be ultra aggressive here. I think he'll have to play to the situation a little bit and respect the better deliveries. He's just trying to smash everything out of the park right now. Maybe there is a bit of pressure putting on him because of the struggle Arif Zafar is in. So I think the spinners will have to step up and and support the quicker man here for the Gladiators, because a lot depends on how they bowl and restrict Dynamites if they want anything out of the game. A slower one by Asad Sharif, big appeal as well. I think it pitched outside leg, so certainly cannot be given out. So meanwhile, at Green Acres, the Hurricanes are in some dismissive mood tonight rather. Yes, as I mentioned, Mia Manan and Afur Azhar absolutely running riot on the Viking bowlers. Another good delivery by Asad Sharif here. So Asad Sharif has put in some really good 2 overs, and especially in front of batsmen like Hassan Ali Khalid and even Arif Zafar. If he gets going, he can certainly hit the ball a mile. Just giving away 3 runs in his over. The Dynamites are 26 for 0 after 4 overs. So a slow start from the Dynamites. I think Awais is bringing himself into the attack, if I'm not mistaken. Is he coming on to bowl himself? I think so. Well, we'll have to see if this is the best option available at hand to Awais Khan. Damir, I still feel the older ball is a lot more effective as far as the spinners are concerned on this surface. I think they have Kaleem Azhar for that. So Kaleem Azhar's 4 overs in that time frame will be very, very, very vital for the Gladiators. And Awais Khan just coming in to I think, check the wicket and to see if... Maybe buy a wicket. Because we all can see that Hassan Ali Khalid is going after everything literally. And He's Awais just Khan not is playing it to its merit. And Awais Khan is not a poor bowler as well. He's a very, very decent bowler. So he can... Well, he slows it up. He has that flighter delivery in his locker as well. So he will be bowling around the wicket to Arif Zafar. Has a brilliant first delivery. Wanted Arif Zafar to go against the line, but Arif Zafar was firm on his back foot. Hassan Ali Khalid now will face Awais Khan for his second delivery. And I think Hassan Ali Khalid will either announce himself in the Premier League in this over, or it can be otherwise. That is a huge hit. And that being said, he just announced himself as Hamza Bela, just said it. I wouldn't even rule out 3 more, or maybe 2 more at least in this over. Well, he is in that mood. He is going after every delivery. He might hit 2 more sixes here, Damir. So, do we have a wager here? Let's see.
Well, he chooses to ramp it. I think he probably could have smashed straight over deep mid wicket or even long on. But he decides to ramp that one and get 2 runs. Smart cricketer. So all round. showcasing their running between the wickets as well. So, well, yeah, then he's not going after everything. Maybe He it just was- needed a 1-6 to start going. Yeah, and he's just going after that 1 out boundary early in the over, and then obviously he can rotate and bring Arif Zafar into the game as well. So Hurricanes in the meanwhile are 85 for the loss of 1 wicket in 8 overs. Faham is the only batsman to be dismissed. A better delivery from Mas in the meanwhile. Another 2 for the Dynamites. And Afar Raza and Mia Manan, the 2 platinums that the town has been talking about, are batting together, and Afar has already raced to 41 of just 18 deliveries. So Damir and his brother doing the smart thing, bowling only 1 over and getting himself off the attack. And that's that flighted delivery to Ehsan Ali Khalid. He couldn't really connect much, but another double. So good running between the wickets. So Hassan Ali Khalid is working his way into this inning, trying to gain the confidence. And yes, he's not being reckless, he's not going after everything. A good over by West Khan, a decent over by West Khan, giving 13 runs. But considering the fact the way their first 2 bowlers are bowling, it was a bit expensive for the Gladiators. Dynamites are 39 for 0 after 5 overs, and Kaleem Mazhar has been brought in to bowl the 6th over. So he is sticking with the spinner, not going towards his fast bowlers. Kaleem Mazhar has been brought in. So Kaleem Mazhar very early in the game has been brought into the attack, and obviously Awais realizes the fact that he needs to get rid of Hassan Ali Khalid. Kaleem Mazhar knows Hassan Ali Khalid quite well. They both play for Pakke Muh Wale in the Division A. Beautiful delivery by Kaleem Mazhar first up. Arif Zafar finds those deliveries coming into him very uncomfortable. So Kaleem Mazhar will be bowling to Hassan Ali Khalid. This will be a good little battle. In the meanwhile, Faraz has dismissed Afar Raza. So a good shot by Hassan Ali Khalid. Four more runs added to the tally for the Dynamites. Faraz Mirza bowling an in-swinger to Afar Raza and just running past him. I was actually expecting a bit of a send-off, but since I realized it wasn't Hamza Kamal Billa versus Tala Kamal Billa, we've got maturer people on the market. So the battle has been won by Faraz Mirza in this instance. So Kaleem Mazhar will be bowling around the wicket. He bowls an away spinner, and Hassan Ali Khalid puts bat to bowl there. Just get a single. Few words being passed as well. So Kaleem Mazhar will continue bowling to Arif Zafar. He runs in, bowls a flighted delivery, but Arif Zafar couldn't find the connection. Kaleem obviously bowls those sharp in-spinning deliveries.
He has that Muralidharan-like action, as we call it. Kaleem Mazhar with a very good first over, giving away 7 runs so far. Last delivery to be bowled to Ehsan Ali Khalid, the man in form. He runs in and delivers it. And again, he ends the over with a beautiful away spinner. Just 7 runs in that over. That being said, Dynamites are 46 for 0 after 6 overs. Ehsan Ali Khalid on 40 of 22 and Arif Zafar on 6 of 8. An off spinner, a right arm off spinner against a left hander is always a good little competition to look at. Good little battle. So Vas will be coming back to bowl. He's obviously decided that he will put the Dynamites to the test with some spin bowling early in this innings. That was a good delivery. Arif Zafar just backed away rather than going towards the pitch of the delivery on that occasion. Arif Zafar needs to go big here. He is struggling very much. He goes straight down the ground. Will it be covered? Yes, the fielder was there to cover it. So just a single, and the struggle continues for Arif Zafar. Yes, Arif Zafar is continuously not being able to find the middle of the bat. Ehsan Ali Khalid taking a new guard against Awais Khan. Awais Khan with a flighted delivery again, played towards the leg side. Finds the gap, Ehsan Ali Khalid, and that's a 4. So a much needed boundary for the Dynamites. Bit of a cheer from the teammates as well. Awais Khan to bowl his 4th over, 4th delivery now. Ehsan Ali Khalid goes big, straight down the ground. Will he find the distance? Yes, he. And he's been sent back to the pavilion. That is a good catch. And Awais Khan bringing himself, continuing with himself has paid off for his team. So the plan worked for Awais Khan. Smart captaincy by Awais Khan. He wanted to get rid of Ehsan Ali Khalid. He got that done. Ehsan Ali Khalid, who was caught by Kaleem Mazhar on 44 runs of 24 deliveries. He was playing very well, but Awais Khan got the last laugh. That is a big wicket in the context of the game, and that will bring Umar Dogar out onto the wicket. He's decided to promote himself, and certainly he is a player for such occasions to absorb the pressure. Whereas in the other game, the two people we were talking about, Afar Raza and Mia Manan, both have been taken out by the Vikings. Ali Raheel getting the wicket of Mia Manan. And Awais Khan with his last delivery to Umar Dogar. They are running back for the second. Good running there. And they will complete a couple. So we are done with 7 overs. The Dynamites are 53 for 1. Awais Khan, who gave away 20 runs in his 2 overs but got that all important Ehsan Ali Khalid wicket. So Kaleem Mazhar will be continuing, and he will be bowling to Arif Zafar. Kaleem Mazhar runs in with his peculiar run up, bowls well to Arif Zafar. Arif Zafar plays it towards the leg side.
उधर पड़ी है कौन just for a single. तो बैग के पास देखे कोने में ब्लैक बैग के पास Kaleem Mazhar runs in for his second delivery now. Umar Dogar goes big down the ground. And he has been caught. That's a big wicket. So 2 wickets in no time lost by the Dynamites. They are in a spot of bother right now, and the Gladiators looking the happier of the two teams right now, Damir. So very smart captaincy by Awais Khan, bringing the spinners early on and getting rid of two of their best batsmen as well. So that is commendable job by Awais Khan and Kaleem Mazhar there. Munir Janmaz nahi. Munir Janmaz. पड़ी थी पता नहीं कहाँ गई इधर थी So Kaleem Mazhar will be bowling to Akil Butt. So Akil Butt has been sent in. Obviously Akil Butt is more than capable of absorbing the pressure. Play towards the covers. Nothing more than a single for Akil Butt. Kaleem Mazhar to bowl his fourth delivery now to Arif Zafar, who is struggling out there. A very hard hit shot by Arif Zafar towards the long on, but he still couldn't pierce that field. So Akil Butt will certainly need to play a role here. He will need to put up some runs. Kaleem Mazhar to bowl his last delivery now. Tried to sweep it. A big appeal by Kaleem Mazhar. Well, going against the line, when you're facing Kaleem Mazhar can be suicidal, but might have gotten some part of the bat on that one. Just to tell you how vital the spinners are in this surface, Kaleem Mazhar just gave away 10 runs in his 2 overs and taking a wicket as well. We saw this type of performance by Shaban Akhtar as well in the previous game. So the Dynamites have one of the best spinners in the circuit as well. So stay tuned for the exciting 4 overs of Wasim Abbas. Mohammad Mohsin is being brought in by Awais Khan. Another spinner, and he bowls leg spin. A bit of a shorter one this time. He finds the gap. Akil Butt goes for a 4. Poor delivery, deserved to be hit there. Not the start that Mohammad Mohsin wanted, but the start that Akil Butt wanted. Mohammad Mohsin runs in again. He tries to sweep it, couldn't really find the connection. They are pushing for the second, and really good running by Akil Butt and Arif Zafar.
So I think this is the plan of Awais Khan, to bring in the spinners early, put on the pressure, and by the looks of it, I think he has one or two more options as well. Mohammad Mohsin runs in again, play towards the leg side. The fielder is there to cover it, but he found the gap. Beautiful shot by Akil Butt. So Akil Butt is finding the boundary here for the Dynamites, and he will certainly need to do a lot more of. Well, he is a bit of a replacement for Zohaib Shah, so he will certainly need to step up and fill those boots here, Damir. Yes, absolutely. Mohammad Mohsin runs in again for his fourth delivery. A good one this time, nudge towards the offside. They want to push for the second. Akil Butt wanted the second, but Arif Zafar wasn't interested in that. Nine runs given away so far by Mohammad Mohsin. Last delivery. Arif Zafar with a big swing and a miss. Finishes off well. In the meanwhile, Arif Zafar struggling to find the middle of his bat. Any sort of connection so far, Arif Zafar is struggling to find. So the Dynamites are 68 for 2 after 9 overs. I feel like we're in for an upset at this point. I think Dynamites have got the depth to make a comeback at any stage of the game. You know, they've got the batting, they've got the bowling as well. So anything around 150, 160 by the Dynamites, I think they're still in the game. Awais Khan is coming back in for his third over now, giving away 20 in his 2 and taking that all-important Ehsan Ali Khalid wicket. Runs in for his first delivery of his third over. Good delivery. Forced Akil Butt to defend that one. Yes, Akil Butt is certainly the sort of a player who will play himself in. He's very proper, you know, with his front foot, and he can hop onto his back foot as well. Awais Khan runs in for his second delivery. Another good one. A miss hit. Will he grab that? Falls into the no man's land. Another good delivery by Awais Khan. So Awais Khan is been difficult to put away here. Certainly leading from the front tonight. Namir, I think out of all the captains, Awais Khan certainly looks the one that, you know, who's learned the most from the previous season. Yes, absolutely. Coming in early, taking important wicket, bowling well. Another good delivery. That was a beautiful delivery. Well flighted, in the best possible area for a left armour. All Akil Butt could do was nudge it away for a single. Arif Zafar needs to find a connection and needs to find it fast. Awais Khan runs in to Arif Zafar, and Arif Zafar goes big this time. Crosses the boundary, big 6. Finally, he got the connection, and he finally dispatches it away. Much needed boundary, not only for Arif Zafar, but the Dynamites as well. That will certainly release a lot of pressure. Awais Khan running in for his last delivery now. And Arif Zafar goes again, but this time he couldn't find the connection that he wanted. Straight to the fielder just for a single. So Awais Khan is persistent with his economy of 10 runs an over. I think he's getting wickets, which is the most important thing. He's taken one right now, right? One wicket and a very big wicket of Ehsan Ali Khan, who was on Ehsan Ali Khalid, who was on 44 of 24. Yeah. So a vital wicket as well. We have a strategic timeout, so
We'll be back after the break. And we are back after the strategic timeout. Mohammad Mohsin is continuing with the ball. Runs in for his second delivery now to Arif Zafar. Arif Zafar goes big down the ground. Will he find the distance? He couldn't really find the distance. One bounce to the fielder just for a single. Mohammad Mohsin now runs in again for his third delivery. A bit of a slower one with a flighted one. Nudge towards the offside for a single.
Mohammad Mohsin now for his fourth delivery. Wanted to go big there, Arif Zafar. Couldn't really find the connection. And that's a dot delivery. Mohammad Mohsin now for his last delivery of this over. A good one towards the offside. Arif Zafar finds the edge, and that will be added to the scoreboard with a 4. Dynamites are 86 for 2 after 11 overs, playing at a run rate of 7.82. So even after that little collapse, they have managed to salvage it back a bit. The power surge has been taken by the Dynamites. Muhammad Khan is being brought back. Muhammad Khan, who bowled well before, is being brought in for the power surge. Akil Butt will face the first delivery. Akil Butt finds the gap and straight through the field finds the gap and gets the 4. So a good start to the power surge over for the Dynamites. Muhammad Khan runs in again to Akil Butt. Akil Butt goes again. He finds the distance, he finds the gap. Beautiful shot, another 4. 2 deliveries, 8 runs off it. Muhammad Khan now changing his end, coming around the wicket. That's a poor delivery, a full toss towards the leg side, nudged by Akil Butt, who finds another 4. So that's 3 deliveries, 12 runs off it. Three deliveries, 12 runs in the power surge over. 2 deliveries left. Muhammad Khan running in for his 4th delivery now. Another towards the leg side. Played beautifully, and that's another 4. 4 deliveries, 4 fours.
in the power surge over by Akil Butt, who is running riot over Mohammad Khan here. We have Adil Shah once again in the commentary room. Mohammad Khan runs in for the last delivery. A decent one this time, but he finds the gap again. That's 5 deliveries, 5 fours. A sensational power surge by Akil Butt. So I was very against this fast bowler when Awais Khan opted for him to bowl the power surge. मैं ये कह रहा था कि Awais Khan should have bowled himself because he was bowling superb and there was a turn. Kaleem Azhar, I would not suggest Kaleem Azhar over here because Hikmat and Murli are still yet to bat. So मेरा था कि Awais Khan should have bowled. एक तो टर्न बहुत हो रहा है और he was bowling brilliantly. He has just in 3 overs, पहला ओवर बहुत ही उनका वो गया था, unfortunate, but still they can come back. Abhi it's 106 for 2 in 12 overs. I am backing this guy, Mohammad Mohsin. He has the potential to take wickets. Obviously, a leg spinner is always a wicket-taking bowler. But I don't know, pressure है थोड़ा सा ज़्यादा या lack of experience है कि क्योंकि most of the balls जो है ना वो hard half pitch करा रहे हैं, जहाँ पे वो टर्न होती भी है तो वो कोई इतना मैटर नहीं करती. बट द वे ही बोल्ड 2-3 बॉल्स टू आरिफ, इट वाज ब्रिलियंट बॉल्स. सो अगर वो कंटिन्यू करते हैं ना वो वाली बॉलिंग तो ही कैन बी अ मैच विनर. ही बॉल्स एंड गुड बॉल, अ वेरी गुड बॉल, बट थोड़ी सी आगे टर्न होने का उन्होंने टाइम नहीं दिया. एंड बट मैं आपको एक बता दूँ, आकिल भट्ट जो है ना, ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन एंड ही हैज़ शोड ही हैज़ प्लेड 15 बॉल्स में 34 रन इन दिस पिच इज़ वेरी गुड बैटिंग. गुड बॉल अगेन बट वाइड. आई थिंक प्रेशर ले रहे हैं. व्हाट डू यू से? सही कह रहे हैं, थोड़ा सा लाइन लेंथ, अगर लेंथ पकड़ते हैं वो स्वीट लेंथ नहीं उनसे हिट हो रही, उनको वो पकड़ी नहीं जा रही. Runs in for his second delivery now. That's the length and line he wants to opt for. बहुत अच्छी डिलीवरी थी और गुड रनिंग एज वेल. अच्छा, आई थिंक कि कैप्टन को ना स्टेप अप करना चाहिए यहाँ पे और इस बॉलर को ना थोड़ा सा इनकरेज करे, थोड़ा सा इसको बकअप करे और इसकी लाइन ठीक करे क्योंकि पोटेंशियल है क्योंकि आई ऑलवेज लाइक लेग स्पिनर्स और इस पिच पे लेग स्पिनर्स कैन बी लीथल. अगेन थोड़ी सी हाफ बॉली एंड दैट्स गॉन फॉर 4. ही इज़ नॉट बॉलिंग टू हिज पोटेंशियल और माइट मसला ये है कि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस और थोड़ा सा जो है ना पीएल प्रेशर. इस तरह की बॉल्स तो आकिल भट्ट कभी छोड़ेंगे भी नहीं. नहीं, ही इज़ अ वेरी कंप्लीट बैट्समैन. अगर लोग समझते हैं कि ही इज़ मतलब एवरेज, बट नहीं, ही इज़ नॉट एन एवरेज बैट्समैन, ही इज़ वेरी गुड बैट्समैन. अच्छा, और ये ना पीएल टू पीएल नज़र आते हैं आपको. और इट्स 4 runs अगेन. वेरी गुड शॉट टू द एक्स्ट्रा कवर. Beautiful 4 runs by Akil Butt and he has moved to 45 runs in just 19. This is a gem of an innings. I'm telling you guys, ये pitch पे इस तरह की batting is like, you must say कि एक 100 run की. स्पेशली जब उमर डोगर को इन्होंने जल्दी आउट किया था, वहाँ पे प्रेशर इन्होंने डाल सकते थे. अगेन वही प्रेशर के साथ ही इज़ बॉलिंग टू द ऑफ साइड. पता है क्या, लेग स्पिनर की जब टर्न हो रही हो ना तो ही शुड नेवर बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप. ही शुड गो विकेट टू विकेट. वहाँ पे जब टर्न करती है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले. बट स्कोर हो गया है 119 in 13 विच इज़ वेरी गुड रन्स. बट स्टिल दे हैव असद शरीफ who's bowled 2 overs
And then Awais Khan, the captain himself, he has got 1 over. Kaleem has got 2 overs. Now Kaleem Azhar should come, and I think he is coming to the ball. Yes. Acha, in the other match, let's talk about the other match. Vikings versus 146 for 5 in 17. Hurricanes, and Hurricanes are 146 for 5 in 16.3. अच्छा, इशू पता है कहाँ पे है? जो ये 49 रन्स पे आफर आउट हुआ है ना, दिस इज वाज अ बिग इशू. आफर को देखा जो बॉल पड़ी थी, नहीं मैंने नहीं देखा, वो आउटसाइड. तेज इन स्विंगर फराज को. अच्छा, फराज भैया नहीं आउट किया. ओ यार, फिर भाई वर्सेस भाई तो था ना. और सारे पता है कि वो 50 हो गए. और Akil Butt having a great 50, just 21 balls, amazing 50 by Akil Butt, gem of an innings. This can be match winning innings because इस पिच पे इस तरह की बैटिंग बहुत कम देखने को मिलती है. स्पेशली उमर डोगर को आउट करके वहां पे प्रेशर नहीं आया टीम के ऊपर, और इस तरह की इनिंग्स खेल गए. हाँ, डोगर एक प्लैटिनम प्लेयर और बिग प्लेयर. अगर उसको आपने आउट जल्दी कर दिया है तो एक प्रेशर आप बिल्डअप कर सकते थे वहाँ पे. बट आपने आकिल बट को ना बहुत सारी फुल टॉसेस दी हैं, बहुत सारी जो है ना बैड बॉल्स कराई हैं. बट स्टिल ही प्लेड वेरी गुड इनिंग्स. उन बैड बॉल्स को भी आप, ओ ब्यूटीफुल बॉल बाय कलीम अजहर, एंड हिकमत हैज बीन बोल्ड. ब्यूटीफुल बॉल बाय कलीम अजहर. आई थॉट हिकमत वहां पे खड़े थे, आई थॉट कि वो बीट हो गए, बट ब्यूटीफुल बॉल एंड हिकमत इज गॉन फॉर 0. फर्स्ट बॉल एंड ही इज डक ऑन द वेरी फर्स्ट बॉलर. इतनी बड़ी विकेट है ये, फिर से बहुत बड़ी विकेट ली है. कलीम अजहर भी बहुत बड़े बॉलर हैं, और अच्छा जो वापसी, अच्छी कप्तानी अवैस खान की, बिग बैट्समैन के अगेंस्ट बिग बॉलर को आप लेके आए हैं. और इस टर्निंग पिच पे बोल्ड, मतलब के ज़बरदस्त बॉल. अब इनके एक बड़े मंजे हुए प्लेयर हैं वसीम अब्बास. ही कैन बैट एज वेल. वैसे जेन्युइनली कमेंडेबल परफॉर्मेंस थी अवैस खान की आज कैप्टनसी. पहले स्पिनर्स को जल्दी इंट्रोड्यूस किया, वहां पे एहसन अली खालिद को आउट किया, उसके बाद उमर डोगर को उन्हीं ओवर्स में किया. बिल्कुल ही न्यू कि व्हाट ही इज गोइंग टू डू. एक लैप्स बस कह सकते हैं वो पावर स्विच वाला ओवर. हाँ, वो हो जाता है. वो उसके अलावा अभी तक परफेक्ट कैप्टनसी कर रहे हैं. हाँ, गुड कैप्टनसी बाय अवैस खान. बट वो यही है कि इन्होंने जो बिग बैट्समैन ले गए. अच्छा, मैं ये बता रहा था किसी को कि डायनामाइट्स ना, वो या तो स्कोर बहुत बड़ा करती हैं या तो बहुत थोड़ा, क्योंकि दे हैव गॉट हिटर्स. ठीक है. और कलीम अजहर विद द सेकंड बॉल एंड वेरी गुड बॉल, बट इट्स अ वाइड, क्योंकि टर्न बहुत ज़्यादा मिल रहा है. ये जो है ना, इतना ज़्यादा टर्न भी ना स्पिनर्स के खिलाफ जाता है, क्योंकि ना विकेट आती है और यहाँ पे ऑफ स्पिनर है तो वाइड ज़्यादा जाएगी. अभी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मुरली को देखने के लिए अगली इनिंग्स में. हाँ, उनके 4 ओवर किस तरह निकलते हैं. मुरली. अच्छा, 3 बॉलर्स टू लुक फॉर. वसीम अब्बास, देन हिकमतुल्लाह हिमसेल्फ, एंड देन उमर शाहजहां डोगर. आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर शाहजहां डोगर की वो स्लोअर वंस गिरे तो वो बहुत मुश्किल बॉलर वो होंगे. वैसे इतने स्मार्ट बॉलर हैं, उनको पता है किधर क्या बॉल करनी होती है. तो अगेन गुड बॉल, बट क्योंकि इट्स टर्निंग अ लॉट तो एलबीडब्ल्यू कम ही मिलेगा इस पे. एलबीडब्ल्यू के चांसेस. अच्छा शाहजीब, आपको क्या टोटल लग रहा है यहाँ से? अच्छा, अभी हुए हैं 124 एंड 14, एंड इनके जो बिग हिटर्स हैं ना, उनमें से हिकमत भी जा चुका है, डोगर भी जा चुका है, एहसन अली खालिद भी आउट हो चुका है. सो अब सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो बात आती है आकिल बट पे. अगर तो आकिल बट आते हैं वापस जल्दी तो फिर तो इट्स गोइंग टू बी 180. बट अगर ये इधर अगर थोड़ी सी अक्लमंदी से बॉलिंग कराएं और इन रन्स कंटेन करें तो इट्स मोर ऑफ 150. ग्लैडिएटर्स 160 बैटिंग को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, सारे न्यू हैं तो आई हैवंट प्लेड मच विद देम. डॉक्टर नूर, कलीम डॉक्टर अजहर, नूर हैं, कलीम अजहर हैं. कलीम अजहर इज अ वेरी गुड बैट्समैन, बट बिट ऑफ अ फिनिशर. बट ही नीड समवन टू जो स्टार्ट अच्छा दे. स्टार्ट में डॉक्टर नूर को थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा. बट यहाँ पे ना उनके पास वसीम अब्बास और जो हिकमत है ना, दे कैन ईजिली गेट हिम आउट.
और वो यही है कि आप बॉलिंग चेंजेस अच्छे करवाएंगे तो आप बड़े आराम से कंटेन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग में है ऐसी डेप्थ है। और उमर डोगर की तो हमें कैप्टनसी का भी पता है कि वो कितने स्मार्ट हैं और हमेशा से हाँ हाँ, 2 स्टेप्स अहेड होते हैं हमेशा बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने उमर डोगर की ना एक जो उनकी जो पिक करते हैं ना, उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ही पिक्स हार्ड हिटर्स। और वो क्या होता है कि मोस्टली पहले गनी में हो रही थी तो वहाँ पे ना इनकी 200 अबव ये जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा इस दफ़ा। ग्रीन एकर्स में शायद अच्छा ज़्यादा कर जाएं, बट यहाँ पे दे नीड मोर ऑफ अ टेक्निकल बैट्समैन। गुड डिलीवरी, फिर से मोहम्मद मोहसिन को वापस लेके आए हैं। नहीं नहीं, अच्छा है, मोहसिन इज़ अ गुड। यहाँ पे अगर मोहसिन विकेट ले लेते हैं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा डायनामाइट्स के लिए 170 करना। गुड बॉल एंड गुड शॉट बाय वसीम अब्बास। अगेन आई टोल्ड यू बिफोर कि वसीम अब्बास जो है ना वो एक सीरियस कैंपेनर हैं और लोग इतना सीरियस लेते नहीं है मुरली को, लेकिन प्रॉपर बैट्समैन है मुरली। प्रॉपर गुड बैट्समैन, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और टेक्निकली साउंड है, कोच भी कहलाए जाते हैं ये। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने अपने फ्रंट फुट निकाल के रीच किया और थ्रू द कवर सो एफर्टलेसली। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट और ये कैच और बिग शॉट, 6 रन्स बाय नन अदर देन वसीम अब्बास मुरली। जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि इस तरह इस पिच पे लेग स्पिनर को इस तरह शॉट मारना, मतलब ये एक टेक्निकल साउंड बैट्समैन ही मार सकता है। ये वो वाले मुरलीधरन है जो बैटिंग भी अच्छी करते हैं। हाँ, वरना मुरलीधरन ने आज तक कभी अच्छी बैटिंग नहीं की। ओ गुड बॉल बाय। एक और शॉट। अच्छा, वो देखा आपने उनको कि वो नए बॉलर है ना, तो उनको अंडर प्रेशर लेके आ रहे हैं, उन पे वो ट्राई कर रहे हैं उनको। और आपने रिएक्शन नहीं देखा मुरली का। हाँ, he was livid with himself कि मैंने ये चौका किस तरह मिस कर दिया। एग्जैक्टली। So he's behaving like a batsman. Again bad ball, again good. It's going, and it's gone. He's out. मतलब कितने रन ले लिए थे इस ओवर में? 12 रन लेने के बाद कोई ज़रूरत पड़ती थी? बट वही है ना कि ही न्यू कि ये बैट्स बॉलर है जिनको आप चार्ज ऑन कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। वहीं पे मैंने आपको कहा कि लेग स्पिनर कहीं ना कहीं जो है ना वो एक विकेट देता ही देता है। ही गोज फॉर रन्स, बट आई थिंक हिकमत के जाने के बाद थोड़ा सा शायद हो सकता है इनको पवेलियन से भी ये चीज़ कही गई हो कि भी आपने तेज किया, थोड़ा प्रेशर भी आ गया होगा यार। प्रेशर देखो, 139 है, गोइंग वेरी गुड। 139 and 15 ओवर्स ऑन दिस पिच इज ब्यूटीफुल। बट मसला ये है कि दे हैव 4 आउट हो चुके हैं और सारे हिटर्स आउट हो चुके हैं। अनीक ख्वाजा आई थिंक इज स्टेपिंग इन। अच्छा, अनीक ख्वाजा इज ऑल्सो गुड बैट्समैन इन दिस काइंड ऑफ जो है ना सिचुएशंस, क्योंकि वो भी काफ़ी पीएल विनर हैं भाई। 2 पीएल जितवाए हैं इन्होंने अब बॉलिंग से, लेकिन आज बैटिंग की बॉलर तो बहुत बड़े हैं। हाँ, लेकिन बैटिंग की आज ज़रूरत पड़ेगी इनको, क्योंकि आरएफ जो है ना बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। और 6 रन्स बाय आरएफ इन द एंड। वो कमेंटेटर्स कर्स कहते हैं इस बार, कमेंटेटर्स कर्स से कमेंटेटर्स कर्स होता है यहाँ पे। हाँ, कमेंटेटर्स चाम मिल गया इनको। आरएफ को अब करना है ना, कितनी बॉलें खेल चुके हैं आरएफ इस वक्त? 24 बॉलें 21 बॉलें खेल चुके हैं और अब इस छक्के के बाद 30 रन पे आए हैं। 21 बॉलें बहुत ज़्यादा होती हैं खेलने के लिए। नाउ ही हैज़ टू स्कोर। अच्छा, बिल्कुल नारायण जैसा। ये कौन से बॉलर हैं? वकास शौकत। अच्छा, ये एक इनके न्यू इमर्जिंग प्लेयर थे। एज से तो नहीं इमर्जिंग लग रहे, और द वे ही इज बॉलिंग काफी साल हो गए। और नारायण की याद दिला रही है इनकी बॉलिंग, जो पीछे छुपा के आ रहे हैं ना, या फिर सिकंदर रजा आप कह सकते हैं। नहीं, बीपीएल में एक बॉलर थे अलीउस करके, अलिस करके, आई थिंक उनसे ज़्यादा मिल रहा है बीपीएल में। अच्छा सारे ना जो ये शहरोज़ भट्टी है ना, इनको बड़ा अंडररेट करते हैं। बट आई हो चुकी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई हैव सीन हिम इन चैलेंजर्स कप, आई हैव सीन हिम इन पीएल। ये बंदा शहरोज भट्टी ही आया है। जी, ये जो बंदा है ना, ही डजंट गिव अप। अच्छा, लगता है ऐसे कि उन टेक्निकली भी साउंड नहीं है, ठीक है, और कद में भी इतने नहीं है, तो ऐसा लगता है कि बस एम ही सा प्लेयर है। बट यस, ये टिक भी जाते हैं,
ऐसी सिचुएशंस को रीड भी कर लेते हैं। देखा अबू तराब अभी बड़े गौर से देख रहे होंगे। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं गलत करी जा रहा हूँ, कैच नहीं, ये क्या हुआ है, ये व्हाट हैपेंड ओवर हियर, They did not व्हाई go for डिडंट the डॉक्टर नूर वेंट फॉर द कैच, क्या हुआ है? द यूजुअल डॉक्टर नूर एंटिक्स, आप तो जानते ही हैं। बट व्हाई, मतलब अगर यहाँ पे एक विकेट आ जाती तो डेड था उनको, बहुत अच्छी पोजीशन में। बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाना था। और अवैस खान इज वेरी फ्यूरियस बाय वापस आ जाए। फ्यूरियस, और बहुत वो डांट रहे हैं इस वक्त डॉक्टर नूर को। ऑब्वियसली बनता भी है इस लेवल पे, इस लेवल का प्लेयर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते। बट वही बात है ना, एवरी इन पीएल ना ये लोग सोचते हैं कि कीपर जो है ना कोई भी कर लेगा कीपिंग, और पीएल में ना खासकर यू नीड अ गुड कीपर, प्रॉपर कीपर आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रन्स, बहुत सारी इस तरह अब ये कैच हुआ होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती। और हमने एवेंजर्स की गेम में भी देखा कि कीपर से काफी मिसफील्ड हुई। एग्जैक्टली वहां पे अगर वो ना होता तो वो भी गेम और मजीद फंस जानी थी। एग्जैक्ट, ओ कलीम अजहर को खेलना मुश्किल है भाई इस विकेट पे, और मेरे ख्याल में कलीम अजहर का लास्ट ओवर है और इसके बाद पीछे 3 ओवर रह जाएंगे, और कलीम अजहर इज बॉलिंग ब्रिलियंटली। 3 ओवर 2 असद शरीफ के होंगे। और ये इस विकेट पे ना ये वाली जो स्टैट्स हैं ना ये ही बनते हैं एक गुड स्पिनर के। 3.116। यस, अवैस खान ने अपने साथ वो नहीं किया, इंसाफ नहीं किया, नहीं तो अवैस खान जैसा बॉलर भी है ना, ही शुड हैव गॉन फॉर 20 ऑड रन्स। चले कोई नहीं, बिग हीव, लेकिन कलीम अजहर एंड ही शुड गेट हिम आउट नाउ, बिकॉज इफ ही डजंट गेट हिम आउट ना तो ही माइट बी इन द एंड ये ना पिंच करेगा इनको। कलीम अजहर with his second last ball and that's gone for 6, फ्लैट 6। फ्लैट 6। पावरफुल तो हैं, पावरफुल हिटर है, पावरफुल भी है, और तो बिल्डर भी है जी, बिल्डर भी है। हाँ मौजूद है मिस्टर दैट आर। बट क्या हुआ है कि कलीम अजहर ने ना एक बंदे से गिरी जाती है बुरी बॉल, वो गिरी है, और मेरे ख्याल में ये पहली और आखिरी बुरी बॉल गिरी होगी इनकी, क्योंकि ये लास्ट बॉल है। और मैं आपको कह रहा था कि ये ना इन दी एंड अगर आउट ना हुए ना तो ये पिंच करेंगे। एंड ही इज गॉन, और डंडे कर बोल्ड कर दिया है, बॉल जरा थोड़ी सी बैठ गई थी। मेरा ख्याल था कि आरिफ जफर को शायद उनको ये इतनी क्रिकेट खेली है, थोड़ा सा वो डाउन द विकेट आएंगे। और नहीं आरिफ जफर जितनी मर्जी क्रिकेट खेले गेम है ही नहीं, है ही नहीं। नहीं वैसे भी डाउन द विकेट भी आते ना तो ये बोल्ड ही होना था, क्योंकि बॉल बहुत नीचे रही है और बिल्कुल विकेटों में और विकेटों में मतलब टर्न करके गई है। तो लो जी, अब इनके यंग प्लेयर आए हैं, ज़ुहैब जवाद, ही इज आई थिंक 18 years old और मे बी लेस, और मे बी लेस, मतलब प्रॉपर इमर्जिंग है। और प्रॉपर इमर्जिंग है, ही इज लेग स्पिनर, द रियल इमर्जिंग। ठीक है। ही हैज़ प्लेड, मतलब बहुत थोड़े मैचेस खेले हैं और वो इन्हीं के साथ ही खेले हैं, डोगर के साथ, मतलब बैटिंग तो की ही नहीं इन्होंने, हैं जो इनके स्टैट्स बता रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल बैटिंग नहीं की। तो इससे पता चलता है कि इमर्जिंग प्लेयर, राइटफुली इमर्जिंग। असद शरीफ आए हैं। डायनामाइट्स आर 156 for 5 आफ्टर 17 overs, तो 3 वाइटल ओवर्स हैं। एग्जैक्टली, मतलब यहाँ पे ना इनको इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। दे नीड टू कंटेन, विकेट विकेट कंटेन करें, सिंगल 5 रन 6 रन का ओवर निकालें। तो अगर 3 ओवर रह गए तो 15 रन और 170। और डायनामाइट्स चाह रहे हैं, हो गए डायनामाइट्स चाह रहे होंगे कि आकिल बट आए वापस। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी ना फंस भी सकती है, अगर आकिल बट आउट हो जाते हैं तो ये स्कोर यहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर आकिल बट चले गए, बट अगर आकिल बट चल जाते हैं तो वही आकिल बट आउट होंगे। आई थिंक सेंसिबल प्लेयर है, वेरी सेंसिबल वन। टेक इट डीप टुवर्ड्स द एंड, और अच्छा, हो भी सकता है कि बिग फिनिश। हाँ, लेट्स सी द अदर जो मैच हो रहा है, Vikings versus Hurricanes. So Hurricanes have scored 165 in 20 overs for 6, and
ग्रीन एकड़ में मुझे लगता है Pick of the bowler Ahmed Mela in 4 overs 28 runs, and then Ali Rahil 4 over 28 for 2. These were good bowlers. अच्छा सामल तारे को नहीं उन्होंने ओवर दिया 1 for 6. अच्छा बॉलिंग एक ओवर अच्छा फराज करा भी है। 4 overs 30 runs और 2 विकेट, जिसमें से एक ऑफ हाँ मेरे बड़े दोस्त हैं और पिछली ऑक्शन में पिक नहीं हुए थे, तो बड़े वो थे, मैं इसने कहा मैं आई ट्राई, और इस दफ़ा क्या लक हुई है कि ही इज़ द ओनली सिल्वर प्लेयर, सो दे कैन नॉट ड्रॉप हिम एंड ही हैज़ टू प्ले ऑल द मैच मैचेस। मिलेंगे सो क्या मैच मिलेंगे फ्रॉम नॉट पिक्ड टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर फ्रॉम नॉट पिक टू एवरी गेम मतलब ये आप देख लें कि किस्मत हो तो ऐसी। मोहसिन भी ऐसे ही है ग्लैडिएटर्स के लिए, हाँ वो भी इज द ओनली वन, उनको भी मैचेस मिलेंगे। Oh, Shozi Butt, very good shot by Shozi, and 1 run के लिए। राइटफुली सो आकिल बट और ये misfielding by Asad Sharif, these misfields can hurt you in the end। एक एक रन इस टाइम मैटर करेगा, क्योंकि this pitch is not a good pitch to bat on, और जितने रन्स भी अब ऐड ऑन होंगे ना वो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि दे हैव 160 क्रॉस, दे हैव क्रॉस्ड 160 एंड अभी भी 2 ओवर पूरे पड़े हैं, सो आफ्टर 160 ना आई थिंक ये बोनस रन्स हैं जो भी मिलेंगे। अच्छा उधर मैं देख रहा हूँ हालांकि ग्रीन एकर्स की बैटिंग पिच है, बट 160 से जो फर्स्ट है वो 160 से अब ऊपर नहीं जा रहे। और जबकि उनके पास मियां मनान और फराज मिर्जा और मूसा एग्जैक्टली मियां मनान, आफर, मूसा, ये अच्छे बैट्समैन हैं, ये गुड बैट्समैन है। आफर का वो कह रहे हैं कि अच्छा भाई ने सोचा हुआ था कि मैंने इसको आउट करना है। 49 पे आउट होना ना बड़ा वो होता है। और मुझे लग रहा था थोड़ा सेंड ऑफ देंगे, लेकिन वो उनके साथ से गुजर गए, तो फिर मैं दामेर को वही कह रहा था कि अगर मुझे याद आया कि इट्स नॉट हमजा कमाल बेला वर्सेस एग्जैक्टली तला कमाल नहीं गुड ये अच्छा है। एंड पे आप मैं था कि 50 हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकता ये। सो आ गए अवैस खान इज बैक। ये ओवर मैं कह रहा था कि अवैस खान शुड बॉल इन द पावर सर्च सर, पावर सर्च 2 राइटीज, गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर, स्पिनिंग बॉल बैठ रहा है, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। फेरोज भट्टी फॉर 1 रन। वहाँ पे आकिल भट्ट की विकेट भी ले सकते थे पावर से, क्योंकि वो ओवरहिट करने जाते हो। बिल्कुल सिचुएशन ही खत्म हो जाती। हाँ अभी आपको देखना पड़ता है कि आप सोचें कि 30 रन शॉट होना था इन लोगों ने और 130 होना था। गुड बॉल, दिस वाज मैं उस वक्त से बोल रहा था, बट चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आई थिंक आकिल बट शुड टेक मोस्ट ऑफ द स्ट्राइक यहाँ से, और जितने गेंद खेल सकते हैं खेलें और कोशिश करेंगे बाउंड्री को क्लियर करें जी। गुड जो है ना स्टेपिंग डाउन द विकेट और फॉर गोइंग फॉर सिंगल एंड फॉर डबल, स्मार्ट बैटिंग, दिस इज द बैटिंग आई वाज सेइंग कि ये जो है ना आकिल बट इज अ स्मार्ट क्रिकेटर। Good pick by Dynamites. Very good. In the end, I think in a way थोड़ा सा ज़ुहैब शाह he की got picked in replacement the है। end exactly. अच्छी replacement है। 166 160 सर यहाँ पे 160 above is good score। और जो हाँ और 170 में के यार की हाँ लेकिन वो चेज हुआ है। हाँ वही ना, ये 160 ये चेज होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इधर ना 2 बड़े बॉलर हैं, मुरली और हिकमत। दूसरा चूंकि अब डार साहब यहाँ बैठे हुए हैं तो वाइकिंग चेज करेगा, वाइकिंग डार चेज साहब करेगा। यहाँ बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी तारीफ भी करनी बनती है नाइट राइडर्स की। नहीं नाइट राइडर्स की जो कप्तानी हुई है ना, और जो हमारे साथ उजैर डार बैठे हुए इस वक्त, थोड़ी सी उनसे भी बात पहली करना बात तो ये चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि हमें पर्पल या पिंक नहीं देखने को मिला, तो इससे पता चलता है कि कितने सीरियस हैं। और एक रेड कलर, उन्होंने बड़ा सीरियस कलर खून लेके उतरे हैं इस दफा। अच्छा डार साहब एक देखिए मैं सवाल हमारी पूछूं। आप जिस तरह बेलिक्स की बात को थोड़ा मैं सुझाव दे दूं कि एक्चुअली हमारी मजबूरी थी
क्योंकि अल्फला इन्वेस्टमेंट ने स्पॉन्सर किया था, तो हमारी मजबूरी थी कि अपना जो लोगों को हमने फॉलो कलर स्कीम को फॉलो करना चाहिए। तो और गुड शॉट और टीम ने तकरीबन आप कह 6 सकते हैं runs टीम by ने Akhil Butt. 2 सालों बाद हमें अच्छी किट बना के दी है, नहीं तो लास्ट में आपको पिछली से पिछली तो हमें फूड पांडा वाली किट दी थी। फूड पांडा दिया था, फिर आपको उसके बाद पर्पल वाली लास्ट किट ईयर भी वाली दी किट थी। अच्छी थी लेकिन एक्चुअली नजर नहीं आई क्योंकि हम सारे मैच आ रहे थे। अच्छा आज आपने मुझे जो है ना किसी एक बड़े कैप्टन की याद दिलवाई है आज देखें आज का मैच आप- देखो बड़ा अच्छा मैच हुआ। बाहर बैठ के कप्तानी करना बहुत मुश्किल होता है देखिए वो आज कैसे हमारे किया आज आपने? हमारी टीम में 2 कप्तान थे, एक अंदर था एक बाहर था। और आपको पता है, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हम थ्रू आउट पिछले 7-8 साल एक गंजे के साथ खेले हैं, तो उसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ। इस बार मैंने पीएल में 2 गंजे उठाए हैं, तो उसका फाका हुआ हमें। नहीं आप पिछली दफा चारों मैच आ रहे थे इस दफा पहला मैच जीत के आपके होप्स तो बहुत शाह हाई जी, आपने होंगे एक चीज़ नोट की, आपने जैसे चारों मैच इतना ऊंचा बोला, आपने थोड़ा आहिस्ता बोला यार, आवाम सुन रही है। और अभी आप देख रहे हैं 2 मैचेस चल रहे हैं, ग्रीन एकर्स में चल रहा है और एक ईएमई में चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो ग्रीन एकर्स वाला है वो रिव्यू लिया है जी ग्रीन रिव्यू एकर्स है वाला आई एम श्योर स्कोर चेज हो सकता है और आई एम श्योर होगा, बड़ी टीम है, बड़े प्लेयर हैं। रिव्यू और, लिया है सर ये जो ईएमई में हो रहा है आई एम श्योर ये स्टेज नहीं होगा क्योंकि 170 प्लस बड़ा अच्छा स्कोर है। और फर्स्ट मैच आपने देखा था केआर वर्सेस एवेंजर्स का हुआ है। रिव्यू है हमारे अंपायर ने रिव्यू लिया है शाह जी मैच रुका क्यों है? रिव्यू हुआ है सर छोड़ दिया शाह जी, मैंने टिमी से रिक्वेस्ट की है कि पीएल साल में 2 दफ़ा होनी चाहिए, एक नाइट में और डे में। आपका इस पर क्या कमेंट है? सर ये तो जो है हमारे सीईओ ही बता सकते हैं इस पे क्योंकि लेकिन अगर आप ओवरऑल ओनर से अगर आप इस पर एक इतना फीडबैक ले लें, तो यहाँ जिस तरह हमने आप लोगों ने चैलेंज सब कराया, पीएल कराई, तो इस तरह का इस तरह के आसपास का कोई टूर्नामेंट करवा सकते हैं आप? जी बिल्कुल एक और टूर्नामेंट आने वाला है और वो लेजेंड्स कप के नाम से आएगा टूर्नामेंट और उसमें इसका क्राइटेरिया क्या है? उसमें लेजेंड्स खेलेंगे सिर्फ तो वो तो आपके सामने बैठा हुआ है। हाँ लेजेंड आप हैं आप खेलेंगे तो शाह जी, मैंने टीमी से बात की थी कि कोई कॉर्पोरेट कप टाइप हो कि जिसमें हमारे लेट से अगर 10 टीमें होती हैं तो 10 टीम जितनी भी टीम्स हैं सारे जो उनके ओनर्स हैं ना वो सारे कॉर्पोरेट वाले हों। एज एन के जिस तरह बैंक अल्फला ने स्पॉन्सर किया है, इस तरह बाकी बैंक्स हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं, तो इस तरह करके वो टूर्नामेंट हो। हाँ इस पे क्या बिल्कुल feedback नहीं आपका? कॉर्पोरेट अगर होता है तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि काफ़ी elements जो अच्छी है वो कॉर्पोरेट है, सबसे- जिस तरह फातमा वाले स्पॉन्सर कर सकते हैं, पंजाब ग्रुप कर सकता है, एफएफसी वाले कर सकते हैं। तो इस तरह हम इस पर वर्किंग कर सकते हैं, अगर मिलकर इस पर कुछ सोचा जा सकता है। बिल्कुल ये हो सकता है एक अच्छी सजेशन है आपकी तो और क्योंकि ये मैं- बॉयज़ को एंगेज रखने के लिए इस तरह की चीज़ें, इस तरह के टूर्नामेंट्स होते रहने चाहिए। अभी हमारे सीईओ बाहर गए हैं और आते हैं तो मैं उनको सजेशन भिजवाता हूँ आपको टीमी पे तो मेरी थोड़ी इस पर डिस्कशन हुई है, बाकी इंशाल्लाह पीएल के बाद करेंगे, कोई कॉर्पोरेट की तरफ थोड़ा फोकस किया जाए ताकि जो है ना। गुड शॉट ऑफ सिंगल गुड फील्डिंग बाय सिंगल नहीं लिया नहीं मेरे ख्याल लास्ट बॉल एंड rightly refused किया। अच्छा तो यहाँ पे मुझे बताएं कि ही इज गोइंग फॉर होम रन कैन ही हाँ कैन ही डू इट मुझे व्हाट लगता डू है यू थिंक कि कहाँ बॉल कराएगा जल्दी बताएं आ जाएगा और लेट्स सी ओ बहुत ही अच्छा स्लो बॉल, बहुत अच्छा slow यार, ball, बहुत अच्छी जगह पे गिरा और मतलब एवरीथिंग जो है ना वाज परफेक्ट फॉर अ बॉलर वरना इस टाइम पे ये वाली बॉल जो बड़े है ना बड़ी हिम्मत चाहिए और बड़े मतलब वो हाँ चीजें हाँ चाहिए हाँ जो हम हाँ कह नहीं सकते। सकते बड़ा दिल चाहिए कैसे So we are done with the Dynamites innings. They have scored 176 after for 20 overs. So the Gladiators will require 177. So बहुत ही अच्छा टोटल बाय द डायनामाइट्स एंड What वी are your विल हैव टू prediction? सी कि हाउ द ग्लैडिएटर्स विल गो फॉर द रिस्पांस मुनीर भाई और वी विल सी यू आफ्टर द इनिंग्स ब्रेक। रिवाइव होगी उनको 8 रिवाइव हम लोग हाँ दोनों टीमों को बस हमने ना इसी ब्रेक में देनी है
माइक कर दिया on? So we welcome you back to the second innings, and the Gladiators will have to chase 177 on this difficult wicket against a good bowling lineup which the Dynamites possess. They have some worthy spinners, some very experienced campaigners in Umar Dogar and a lot of the other guys, who will obviously support him in order to restrict the Gladiators for as less as possible. They are starting with Wasim Abbas Murli, and like we all imagined, obviously he's someone who can take early wickets. But we have capable batsmen in Ismail Butt and Asad Sharif out there. So the Gladiators will need to come up with a great response here if they want to cause an upset here tonight, Damir. Yes, absolutely. This is the bowler that we were talking about. He is made for this type of wicket. We saw what Kaleem Azhar did with the ball, and let's see what Wasim Abbas Murli will do with the ball. Starting off the innings with the ball, Wasim Abbas, what a player he is. Runs in for the first delivery and starts off well, as expected by Wasim Abbas. Ismail Butt had to negotiate and just take a single. Well, Ismail Butt is certainly someone who will have to find his form. He used to be a player who could finish games single-handedly, but obviously he had an accident 2 years ago, and since then he's been struggling to find fitness and form. A back injury, obviously. But he still is a very powerful and capable man. He can hit big, he can big far. He's a sensational he was player. Very effortless when it came to finishing games, absorbing the pressure. Brilliant player, but that back injury obviously kept him away from the game for a few years, 2 years to be precise. So he made a comeback last year, but this year he'll have to come better than the last year. It's a good shot this time. 6 runs by Asad Sharif, so they are putting their intentions out there for everyone to see, Damir. Absolutely, the intentions are clear. They don't care if it's Wasim Abbas Murli or whoever it is. If they find it, they will go for it. Going big in the very first over, and that too against Wasim Abbas. A big statement by Asad Sharif. Yes, for sure, and that will certainly raise a few questions in Wasim Abbas's mind of where to bowl to Asad Sharif. Wasim Abbas with his last ball of his over, of the very first over. Nearly got rid of Asad Sharif on that occasion. The waist spinner helping Asad Sharif to be out there still, and So the could have been a big wicket. first over is done. They are 9 for 0 after 1 over. Good start by the Gladiators, and we could see an upset today. For sure, I mean, the Gladiators have the firepower to be challenging the mighty Dynamites here tonight. Dynamites is certainly a team which is well prepared to see themselves in the final four pretty much every season, Damir, and I think we'll certainly expect the same from them as well this year. Yes, especially, and I feel like they have a better team on paper this year than they had in the previous year, and they played the final as well. As they won, the first PL of that project that Umar Dogar took upon himself, and they reached the final in the second one, and here they are in the third edition
of that. Umar Dogar, who has brought himself on for the second over. Good delivery there. Cut away by Ismail Butt. There was a fielder there. Ismail Butt, a former Dynamites player himself, was part of the Dynamite squad in the previous season. Couldn't really turn up to the expectations to the extent that He Umar had Dogar would have liked. He had some good games, but he wasn't that consistent. Umar Dogar goes again. So Umar Dogar sticking to that outside off channel. Experienced campaigner and such a big-minded player, if you can say that. A very smart player. Wants to relax the nerves a little bit in the first few deliveries and then look for that wicket-taking delivery that he bowls. A sharp in-dipper. Third He can delivery obviously- negotiated once again by Ismail Butt. Umar Nothing Dogar more used than to be a single. lot quicker actually, but obviously a knee injury has caused him to lose some pace over the years. He used to be a lot quicker. But he still bowls with a lot of brains, so he's very lethal with that line and length of his. Runs in again. This time Asad Sharif shuffles a bit to play towards the leg side. I think he will find a gap. Or it's just, they're coming back for the second. Will there be an appeal for a run out? Good running by Asad Sharif, and the batsman having a bit of confusion out there, Damir. Yes, Asad Sharif stopped in the half of the pitch for some reason, whereas Ismail Butt just crossed him there. So a bit of a confusion. But Asad Sharif lucky to be out there still. Umar Dogar to bowl his last delivery of his over, second of the innings. He's given away 5 runs so far. Another good delivery, not giving anything away. He's got the 2 fielders at deep point and deep third man. So a good over comes to an end. 6 Squarish runs third given man, away. rather. 6 runs given away. The Gladiators are 15 for 0 after 2 wickets. After 2 overs. Well, they still have to lose a wicket here, and for that, I think Wasim Abbas Mulli will need to bowl a better over this time around. So, Damir, if I was to ask you that, have you come to a hypothesis or a conclusion as far as the conditions are concerned, you know, as far as the par score is concerned, and how to go about the wicket after the first 2 games? Yes, I think it's a wicket where you cannot go after every ball. And a big appeal, and Wasim Abbas Murli has got his man. This is what he does. Asad Sharif has to go back to his dugout because Murli is there to strike, and he struck him hard. First of all, that is brilliant keeping, I must say. Wonderful take by the keeper. It was a dusra, quicker one, a faint edge, and he's gotten the first wicket on the board, Wasim Abbas Murli. Arif Zafar, the wicket keeper. Brilliant stuff. Ehsan Ali Khalid is the wicket keeper, so that'll do a world of good to his confidence, Wasim Abbas Murli. So will we see another wicket in this over, Damir, or I won't be surprised. so they've actually decided to send in Kaleem Mazhar early. I don't know how much this move will go as far as anything substantial is concerned, but I think they want their senior most player to be out there and absorb the pressure early into this innings. So far, the way Awais Khan has captained this game, I think it might be the right decision. Because he was sensational throughout the bowling. Except for that one power surge over, he was brilliant with his captaincy. I think it was a big decision, but still, I think, yes, I would have to agree with you.
Another dusra, and Kaleem manages to put his bat there and really find a boundary. Shahroz Bhatti is very quick to reach the ball and he restricts it to just 2 runs. Good delivery, not a bad shot, and even better fielding. Well, he did square Kaleem Mazhar up on that occasion, so he was lucky to have found an edge, and a thick one. Murli now for his third delivery. A And beautiful a big delivery. appeal. Will that be reviewed? They think it's straight on. They are taking the review. I think it's straightforward. We will have to wait for the confirmation. We are waiting for the decision, but until then, let me tell you about the game that we are having in the other ground. Hurricanes versus the Vikings. The Vikings are chasing down a total of 166. They are pretty much into the game with 51 for 2 after 5.4 overs. Abdullah Hashmi सीधा लगा. is stood there, who is on 24 of 13. Ali Rahil, who was bowled by Afar Raza in the very first over. So the decision is being reviewed, and it's very close, Damir, closer than we expected. So we'll have to see what the decision is from the third umpire. I think it'll be a huge wicket in the context of the game. Absolutely. Kaleem Mazhar, one of their biggest wickets as well. So the decision has come in, and the third umpire has given it as an out. A big, big wicket for the Dynamites. Wasim Abbas strikes again, and I told you I won't be surprised if he took another wicket. Yeah, it was very casual to say that will we see another wicket, and we have. And we still have 2 deliveries. Will we see another wicket? Well, I won't be surprised. I'll have to say this. Will we see another wicket in the over? So Kaleem Mazhar with a very slow walk back to the pavilion. Because Noor Arya or Noor is also a big leg before candidate. वो इसलिए क्योंकि he also Doesn't put in the stride. He never puts in the stride. so he's always इसकी जो front leg है ना is always come across. कैंची जिसको कहते हैं तो he can. But he also smart leg. Can play the ramp also. So a little insight by the experience. By the Shahji Adil himself. Shahji कह रहे हैं जी कैंची बज सकती है. नाजरीन. Dr. Noor is making the long walk from pavilion to the Well, wicket. it's a circumspect walk, and it's well, I would say that's usual Dr. Noor, but will he be under any sorts of pressure? Only time will tell, Shahji. Yes, he should be because he hasn't played cricket much and सीधा ही PL में ही और सीधा ही मुरली के सामने. और सीधा ही मुरली के सामने सीधा EME. सीधा ही है और सीधा ही ऐसी विकेट पे हाजी सीधी सीधी नजर आ रही है तो सीधी कहाँ न ले. और बड़ा ज़बरदस्त दूसरा किया, दोबारा स्ट्रेटर वन किया जो थोड़ा सा आउट स्विंगर करते हैं सीम से. हाँ इन्होंने नई डिलीवरी निकाली और ये बड़ी बड़ी मुश्किल से पिक होती है, लास्ट मोमेंट में पिक होती है. Will he go for that delivery again or will he go for a spin? What do you say? I would probably say go for the straighter one, the one that he's been bowling. Smartly played by Dr. Noor, and he will come back for the second. He's a good runner between the wickets, very fit guy. Murli should have, gone With the same delivery. With the same delivery. इसको ना wicket to wicket रखनी चाहिए थी. He went for a bad ball. It was not a good wicket taking. और Will we see a ramp shot here, or will we see a block? not against Defensive shot. हो गया. very attacking, very good field setting by Dogar. Yes, Dover is Kept this sticking to the slip. और बहुत ही अच्छा बॉल. ball for the first First up, हाँ.
So a brilliant over by Wasim Abbas Murli and big wickets, big 2 wickets rather. Murli has got 3 overs. 2 overs. 13 runs, 2 wickets. As I predicted, once again, as I predicted, he should go for only 18 runs. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ लो, ਹੋ मैं कह रहा हूँ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ आज ਤੁਹਾਨੂੰ सुबह आप मेरे साथ ही थे. Everybody was going for Raiders. सब एक बंदा लेजेंड्स का नाम ले रहा था, एक बंदा नाइट राइडर्स का नाम ले रहा और वो है आदिल शाह खग्गा था और एक बंदा अब ये तो हम सब मुतफिक थे जी। डायनामाइट्स पे. Because they have got good bowling. और वाइकिंग्स और हरिकेन्स में क्या प्रेडिक्शन है आपकी? आई थिंक वाइकिंग्स शुड बी कंफर्टेबल क्योंकि ग्रीन एकड़ में 166 हाँ, मेरे ख्याल में chase हुआ है, chase shouldn't be हुआ an है. issue. मैं अभी देख रहा हूँ तो इतना टर्न नहीं हो रहा उधर. हाँ हाँ ग्रीन एकड़ तो आपको पता ही है And Abdullah Hashmi, बेल्टर ऑफ अ विकेट I think is on the crease, and he is 29 of 15. Yeah, I have seen him in challenges का great batting, out ही नहीं हुए पूरा पूरा टूर्नामेंट पूरा टूर्नामेंट. 450 runs आउट नहीं हुए विद 200 का स्ट्राइक रेट. मतलब ये इस तरह की इनिंग्स कभी कभी होती हैं, देखने को मिलती है इस तरह के पूरा जो है ना कप. बट ही लॉस्ट फाइनल स्टेज. बट अगेन मुझे लगता है उनकी घर लड़ाई रही है और उन्होंने गुस्सा विकेट पे निकाला है और फाइनल से पहले दोस्ती होगी दोबारा. आला लेकिन फाइनल में भी ही स्कोर्स 80 रन्स ऑन 39 बॉल्स. अनलकी आई वुड से. नॉट आउट ही नहीं हुए भाई, पूरी में आउट ही नहीं हुए. द 280s 160 और ये मगर अभी भी नॉट आउट ही चल रहे हैं. हाँ अभी भी नॉट आउट. क्या बात. वेरी गुड बैटिंग. उमर डोगर अब थर्ड डिलीवरी के लिए. आई थिंक इनसाइड एज ऑन टू द पैड्स. इट्स अ स्मार्ट बॉलिंग, पेस ज़्यादा नहीं लेकिन स्मार्ट बॉलिंग. आई थिंक इस विकेट के लिए उमर डोगर से बेहतर बॉलर मैं नहीं समझता. और बाहर मुझे अनीक ख्वाजा भी मिले और उन्होंने भी सेम बात की कि एवेंजर्स को तलहा को पिक करना चाहिए था इस विकेट पे, जो कि आपने भी जिक्र किया था. और वो नहीं तो एटलीस्ट कोई और टीम जिसने भी एमी में खेलना, आई थिंक ही वुड हैव बीन डन वंडर्स हियर. ऑप्शन हो रही थी ना और तला बेला का नाम आया एंड हमने आवाज लगाई कि ही वाज बेस्ट बॉलर फॉर एमी कंडीशंस. यस EMA कंडीशन. एंड ओए और कैच हैज बीन ड्रॉप्ड. नहीं वो गया ही नहीं. वन बाउंस पे दिया. मुझे लग रहा है ड्रॉप्ड. आई थिंक वी कैन ऑब्वियसली कंफर्म विद द रिप्ले बट मैंने जाके देखा है. could have been one bounce to the fielder. I think should have been taken. थोड़ा फ्लैट लगा था लेकिन फील्डर को जाना चाहिए था कैच के लिए. और विकेट्स तो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी डॉक्टर नूर की. वुडंट वांट टू सी हिम आउट देयर. गुड लीव, पहली लीव देखी है. वेल इस्माइल बट अगर आदिल शाह को याद हो तो बहुत बड़ा प्लेयर हुआ करता था हाँ और सिंगल हैंडेडली मैचेस को फिनिश करता था और बड़ा कंफर्टेबली करता था. नहीं एक तो इसके लॉन्ग लीवर्स हैं ऊपर से. बट वो एक्सीडेंट हुआ था इनका बैक का और उसके बाद से हाँ उसके बाद ये रीगेन नहीं कर सके. हाँ प्रैक्टिस करते थे, नेट प्रैक्टिस. अब ये ना टेप बॉल बहुत ज़्यादा खेल. बट अगेन आई सेट है लेकिन इस तरह की पिच पे अगर वो 50 आपको बारी तो चाहिए. आई थिंक ये अच्छी मूव होगी कि वसीम अब्बास मुरली को चारों ओवर करवा लिए जाएं. यस बिल्कुल. ऊपर से विकेट्स लेंगे तो हमेशा से आपने देखा है कि जो आप इवन के पाकिस्तान टीम का भी देखा है कि ऊपर से विकेट्स आती हैं तो आउट जीतते. पाकिस्तान टीम का आपने जिक्र किया तो शाहजी शदाब खान ऑफ LMS कौन है? शदाब ये बड़ा टफ क्वेश्चन है. शदाब खान ऑफ LMS ढूंढना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो वन ऑफ जो है ना वो कैटेगरी एक ही है पाकिस्तान में. शदाब खान पूरी दुनिया में एक ही. हाँ पूरी दुनिया में यहाँ पे ना अच्छे बैट्समैन है हमारे पास, अच्छे बॉलर हैं. बट ही इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान सो वी मस्ट वी शुड रिस्पेक्ट. ओह जैसे मर्जी खेल रहे हैं. हाँ जैसे मर्जी पाकिस्तान के लिए खेल रहे तो देखे ना वो कलर्स पहने हुए हैं जी तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते. लेकिन अल्लाह सबको इतनी सिफारिश दे.
और ये कैच हो सकता है, लेकिन मुरली जो है ना, मुरली जा रहे हैं और व्हाट अ कैच बाय वसीम अब्बास मुरली. थर्ड विकेट. Another wicket to Wasim Abbas Murli, and will we see the first fifer tonight, Adil Shah? We might see 2.2 में 3 विकेट्स ऑलरेडी हो गई हैं. अभी भी 1.5 ओवर पड़ा है मुरली का. मैं फिर से वही कहूंगा, आई वोंट बी सरप्राइज्ड. हाँ, मैंने भी आपको पहले ही कहा था कि ये इनके लिए विकेट बनी हुई है. अभी तो हिकमत ने भी आना है. ये इन बॉलर्स के लिए विकेट बनी हुई है. बहुत ही अच्छा कैच था. मतलब मुरली इस तरह करते नहीं होते. नहीं, अपनी बॉलिंग में मैंने देखा नहीं छोड़ते. अच्छा? बड़े लालची हैं. जी आदमी. अपनी विकेट अपने बॉल पे नहीं छोड़ते कभी. नहीं, ये तो वैसे मैंने इनको बहुत कैच ड्रॉप करते हुए देखा है. बिग स्टेज पे तो नहीं इस तरह कर सकते. बड़े बड़े डॉली कैच छोड़ते थे, लेकिन अपनी बॉलिंग पे कैच निकले तो गोडे भी रगड़वा लेते. रनिंग बैकवर्ड्स बड़ा मुश्किल कैच होता है, और मुरली जैसे कदीम आदमी अजीम नहीं, कदीम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है. अजीमो कदीम, कदीमो अजीम कह देते. हाँ, कदीम और अजीम कह लिया आप. बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन व्हाट ए कैच, व्हाट ए कैच. मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ वसीम अब्बास मुरली के जो 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको. हसन नकवी और एक और भी हैं जो मतलब फॉर्मली पार्ट हुआ करते थे एलओएस का. लेट्स नॉट टेक नेम्स हियर. बट हसन नकवी फॉर श्योर बड़ा मिस कर रहे हैं हम. वो नहीं. इस दफ़ा किसी ने पैसे नहीं दिए उनके. उन्होंने अपना नाम नहीं डाला. अच्छा, ये नए आए हैं वकास खान. मोहम्मद खान. मोहम्मद वकास खान है असल में इनका नाम. हम आज इनको ढूंढते रहे ना, प्लेयर नेम ऐड करने थे, तो इनका ईमेल ही स्टार समथिंग है. अच्छा. हाँ, पता नहीं क्या स्टार प्लेयर. हाँ, स्टार प्लेयर. तो ये एक न्यू इंक्लूजन है. बिग स्टेज पे पहली दफ़ा आए हैं. नहीं, बॉलिंग इन्होंने अच्छी की है. मतलब फर्स्ट स्पेल अच्छा किया था, सेकंड स्पेल में टच एक्सपेंसिव. और नूर अपना एक्सपीरियंस, पूरे एक्सपीरियंस को गैदर करते हुए कि मुरली के सामने आप मुझे कह रहे थे कि ही विल गो फॉर दी रैम, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी एक्सपीरियंस है और मुरली भी एक्सपीरियंस है. फुल ऑन नेगोशिएट कर रहे हैं. यहाँ पर रैम मारना मुश्किल है. ये रैम मारेंगे ना, घर भी इनके पास है और मॉडल टाउन एक्सटेंशन भी, तो फास्ट बॉलर्स को मारेंगे. लो जी, हिकमत आ गया. अच्छा, सो फार ग्लैडिएटर्स ने 31 रन्स कर लिए 3 विकेटों के नुकसान पे 5 ओवरों के बाद, जिसमें से अभी देख रहा हूँ मूसा मीर ने रन आउट मिस किया है. इतना बड़ा रन आउट मिस किया है, वो विकेट्स के पास ही नहीं थे. ये एक बड़ा अलमिया है कि हमारे जो बॉलर्स होते हैं ना, या जो भी विकेट कीपर नहीं, मोस्टली जो बॉलिंग एंड पे होते हैं, ये ना विकेट से पहले बॉल को गैदर करने की कोशिश, बल्कि विकेट के पीछे आना चाहिए. हाँ, बिल्कुल पीछे होते तो ये पक्के अब लास्ट में रन आउट थे. अच्छा. और शाहजी, हिकमत की बैटिंग नहीं आई आज, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो आई थी, अब चली भी गई. वो इस तरह हुआ, वो मैं पहले ही कहा था कि हिटर्स हैं, और हिटर्स जो है ना ऐसी विकेट्स पे ना बड़ा कम चलते हैं. नहीं, लेकिन टू बी फेयर टू हिकमत, वो बॉल बहुत अच्छी पड़ी. वेरी गुड बॉल. वो होनी है ना, इस पिच पे तो होनी है ऐसी बॉलिंग. तो हिकमत को तो या तो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट लेके आए, लेकिन अब मोस्टली अब लोग यही करेंगे. यहाँ पे स्पिनर भाई खगा जी, आपको मिस करेंगे लोग, और मैं खुद बहुत मिस कर रहा हूँ. अब अपने आप को भी मिस कर रहे हैं. नजर आ रहा है. यहाँ पे तो आपका और वसीम अब्बास का सही कंपटीशन लग रहा यहाँ तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं कोई लेग स्पिनर टाइप बन जाऊँ. हाँ. प्रैक्टिस शुरू करें मेरा ख्याल है. हिकमत उल्ला खान अपना स्पेल स्टार्ट कर रहे हैं अब. बैड बॉल. और 4 रन हासिल किए हैं डॉक्टर नूर ने. इज वेरी गुड स्क्वायर ऑफ द विकेट आइदर साइड. लेग साइड पे तो खास तौर पे काफी स्ट्रांग है. सारी गेम वैसे ऑनेस्टली डॉक्टर नूर के ऊपर ही है. उनकी इनिंग्स किस तरह की होती है उसके ऊपर सारी गेम डिपेंड लेकिन आई करती थिंक है. डॉक्टर नूर के पास उसे सपोर्ट शायद ना हो, और देखना पड़ेगा कि डॉक्टर नूर कैसे इनिंग्स को लेके चलेंगे. अभी मुझे जो वकास खान है ना, ये मुझे ऐसे लगे कि ये ना सपोर्ट देंगे. मुझे ऐसा फीलर आया, और उनको अवैस ने भी कहा होगा. हाँ जी, अवैस खान ने भी इनको कहा होगा. और ये पहली रैंप, और ही स्टार्टेड दिस रैंपिंग शुरू हो गई. हिकमत इज बॉलिंग बिट क्विकर. ही शुड बॉल स्लोअर वंस. डॉक्टर नूर को तो पेस चाहिए रहा हाँ, वो तो सारे दिन कराते रहे और सारा दिन मारते रहेंगे. जी बिल्कुल. और हिकमत सर्टनली विल ट्राई एंड मेक अप फॉर हिज बैटिंग टुडे. ही वाजंट अप टू द मार्क. बड़ा लेजी आए बॉल पे, और पहले बॉल पे ही अपनी विकेट लूज़ की, जो कि यूजुअली बड़ा कम होता है.
स्लो कराई है, टर्न हुई है और एक सिंगल हुई है, ये बॉलिंग है सारी। दायरा भी नहीं पार हुआ, मतलब इससे पता चलता है कि अगर हिकमत टर्न कर रहा है ना, तो आप सोचें कि ये विकेट कैसी होगी। हर स्पिनर ना दिल कर रहा होगा कि एक बॉलिंग करा दें। So in the meanwhile, और बहुत ही अच्छा बॉल हिकमतुल्लाह खान मरवत का, और वकास खान was searching for the length there. ताकि मेरी बात प्रेडिक्शन सही होगी। बाइक से जाइए और फिर डोगर दीजिए। काफ़ी वन साइडेड सा हो गया मैच। मुझे लगता था कि ग्लैडिएटर्स कहीं फंसाएगा मैच ओबियसली। नहीं, वैसे ये थोड़ा सा हमने एक्सपेक्ट कर लिया था, 177 टोटल था और वसीम अब्बास मुरली था, तो ये काफ़ी हद तक एक्सपेक्ट कर ही लिया था। हाँ, अभी ये देखें, इट्स नेवर टू लेट, अभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि क्रिकेट इज़ अ वेरी फनी गेम। अच्छा शाहजी, आई विल नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ आस्किंग यू कि स्ट्राइकर्स की 11 या 8 सॉरी क्या होगी और कौन से 2 गोल्ड खेलेंगे? अच्छा, स्ट्राइकर्स आपके बड़े करीबी दोस्त भी हैं। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ तो उनकी ना थोड़ी सी बॉलिंग जो है ना थोड़ी सी वीक नज़र आ रही एक है। बॉल शॉट है, बॉलर शॉट है, और अगर वो इधर उनका मैच जो है वो मेरे ख्याल में ग्रीन एकर्स में है, वहाँ पे फिर भी बचत है उनके, एक बॉलर कम से भी ना बैटिंग बचत बहुत बड़ी है तो हाँ। बचत है। हाँ, अब मसला पता है कहाँ है कि राजा बलाज या उमर आज़म, क्योंकि उसके बाद उनके पास राजा स्नैन है, बहुत सारे राजा इकट्ठे किए हुए हैं, राजा तलाल है, राजा उज़ैर है, अब किंग है वो राजा उज़ैर, वो तो खेलेंगे क्योंकि वो लेग स्पिन भी पर कराते मुझे हैं। नहीं लगता कि उमर आज़म बैठेंगे, क्योंकि अगर उमर आज़म को उन्होंने बिठाया तो जिस तरह के ताल्लुकात चल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उमर आज़म दोबारा आएंगे खेलने। और ये ओ बिग अपील और एक और विकेट, वसीम Fourth अब्बास wicket for चौथी Wasim wicket। Abbas Murli, and that has been reviewed by the batsman, so we will have to check, ladies and gentlemen. We will wait for the confirmation. Will this be the fourth for Wasim Abbas? On the other hand, Abdullah Hashmi has completed his half century in just 22 deliveries. So उनकी अभी तक जो नॉट आउट स्ट्रीक है वो चल रही है, चैंपियंस कप के बाद से वो अभी तक आउट नहीं हुए और आज भी उन्होंने 50 कर ली है। Vikings are 96 for 2 after 9.4. They need 70 runs of 51 deliveries, so they are pretty much going for the win here. And on the other hand, we are waiting for the confirmation in this game where Wasim Abbas is running riot against the Dynamites batting lineup. First of all, taking Kaleem Mazhar's big wicket with a straighter one and an LBW. Then a beautiful catch of Ismail Butt. He bowled and took a beautiful catch. And now we're waiting for the confirmation for his 4th wicket. So we will have to see what the decision is from the third umpire. The batsman has reviewed it. 4th wicket. So 4th wicket for Wasim Abbas Murli. The confirmation is in. Will we Wasim see the Abbas- first fifer? He still has 3 balls to go. So I think they should bring the fielders in now. Even a silly mid-on, I wouldn't mind. They should bring in the helmets and. हाँ, किया जा सकता है। स्लिप और ले लें, 2 स्लिप्स ले लें। एक आई वुड से कि एक ना लेग स्लिप और एक सिली मिड ऑन ले लेना। एक गली में खड़ा limit off. कुछ तो नया करें ना, कुछ तो मजेदार करें।
बैट्समैन को घुमाने दे लंबी शॉट. या वो जो एक गेम हुई थी जिसमें सारे स्लिप पे चले गए थे, सारे फील्डर्स. नहीं नहीं, क्योंकि एक टर्न है, एक टर्न हुई लेग साइड पे लेना चाहिए. तो एक लेग साइड पे देख स्लिप और एक मैं होता ना तो मैंने एक चांस ले लिया था. क्या है ज्यादा चिका ही पड़ जाता. लेकिन मेरा ख्याल मुरली को दूसरा ही करना चाहिए इधर, और अंदर रख के मिडिल और लेग पे रख के दूसरा करे. वकास शौकत दिस कैन बी वेरी ट्रिकी. वकास उसको शौकत खेलना ही पड़ेगा उस बॉल को. वकास शौकत जो है वो नए बैट्समैन आए हैं. एक अच्छा ये इमर्जिंग ये इमर्जिंग आ गए हैं. और अवैस खान ने इनके बारे में कहा था कि इट्स अ सरप्राइज पैकेज. अवैस खान का सरप्राइज पैकेज वर्सेस मुरली. गुड डिलीवरी, नज की लेग साइड की तरफ. नाइसली बिहाइंड दैट वन. 2 balls टू गो और डॉक्टर नूर अब फेस करेंगे. ओवरथ्रो और एक और सिंगल ले लिया उन्होंने. ये अफोर्ड नहीं कर सकती डायनामाइट्स. ये अफोर्ड कर सकती मेरे ख्याल में, द वे थिंग्स आर गोइंग. बट तो वकास शौकत फिर से स्ट्राइक पे आ गए हैं. और मुरली इज हंटिंग फॉर हिज 5th विकेट. 2 deliveries टू गो. एक और फील्डर ऊपर ले लिया उन्होंने. गुड Second डिसीजन. slip भी ले लिया. सेकंड स्लिप. वेल गली. अब दूसरा कराना चाहिए, हर हालत में दूसरा कराना चाहिए सर, हर हालत में. रन्स इन. वकास शौकत तो सही खेल रहे अच्छा हैं. वो किया उन्होंने क्या उसको कहते हैं, ट्रिक किया कि मैं 2 स्लिप में लेके शायद दूसरा करा दूं. So last ball for Mulli spell tonight, and will he get his fifer? आई डोंट थिंक अब And डॉक्टर that नूर नहीं too आउट of Dr. Noor Dastgir. यार अगर भी दूसरा करा देना. अच्छा बॉल था, लेकिन डॉक्टर नूर was nicely behind it. और what a spell by वसीम अब्बास मुरली. 4 overs 23 runs, 4 wickets for him. और Already man of the match in my opinion. Unexpected. जितना हम उनको प्रेज कर रहे थे उन्होंने वो किया है. वो बंदा उन्होंने हक अदा किया. He's waving the cap around to the fans as well. Well deserved. तो हमें क्या इस पीएल में कोई पर्पल या ऑरेंज कैप निकालनी? हाँ जी. निकालनी तो चाहिए. आप पर्पल पहन लें, मैं ऑरेंज पहन लूं. So after that over, the Gladiators are 47 for 4 after 7 overs. They need 130 more from 65 balls. Basically, they need 130 in 13 overs. So required run rate is hold 10 now. So Hikmatullah Khan will be bowling to Mr. Noor Dastgir. Dr. Noor Dastgir. So Noor just puts bat to bowl there towards the leg side. डॉक्टर नूर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी साथ बैकिंग की, क्योंकि अकेले तो नहीं वो कर सकते ऑब्वियसली, लेकिन एक बंदा अगर खड़ा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है. वकास शौकत जो कि हमें पता लगा है कि अवैस खान ने कहा कि मेरा सरप्राइज पैकेज है, वो भी बैटिंग कर रहे हैं. ग्लैडिएटर्स की दिलों की धड़कनें इस वक्त तेज होती हुई या स्लो होती हुई? तेज होती है. और दिल की धड़कन तेज हो तो एक कार्डियोलॉजिस्ट ही काम आता है, वो उन्होंने रखा हुआ, और वो इस वक्त क्रीज पे मौजूद है. मुझे लगता है इसीलिए उनको पिक किया. So the two batsmen out there quietly rotating the strike. I don't know how much that will affect the game. They at least need a boundary in every over to keep the run rate flowing. So I think Dr. Noor should probably look to at least get some runs on the board for himself more than anything else, because it's just the start of the tournament for them, and his team would certainly want Dr. Noor to have a few runs under his belt. They still have the. अच्छा नहीं. They still have 61 balls. I think that's what you wanted to say.
So Hikmatullah with his last delivery of his second over, pick towards the Wild leg swipe side. towards the onside, and he gets a boundary. So releasing some sort of pressure there. Dr. Noor Dastagir. The Gladiators are on 55 for 4 after 8 overs. Shahroz Bhatti is the new bowler in by the Dynamites. So in the other game, non-PTA Afar Raza has gotten the better of PTA Afar Raza. Well, not only got his older brother dismissed, but now he's smashed him over long off for a huge six. Dismissed on 49. Dismissed on 49. Very stinging and score. he is looking as confident as ever out there, Faraz Mirza. Justifying every bit of penny spent on himself. So the younger brother taking the better of the elder one. Once again for a 6. Another 6 by Faraz Mirza in the other Back-to-back game. sixes by Faraz Mirza. नहीं पहला सामने है दूसरा ऊपर है और दो और है दो छक्के भाई दो छक्के एक दो बॉल पे छक्का ये वाला बहुत प्यारा छक्का मारा भाई एक्स्ट्रा कवर और कवर के ऊपर से मारा वकार शौकत बहुत जोर लगा के शॉट मारी लेकिन गैप नहीं मिल सका. Shahroz Bhatti has given away 1 run in 3 deliveries so far. फिर नो बॉल अगेन नो बॉल बैक टू बैक नो बॉल पर नहीं यार ये दूसरा लगा पहला सामने आ गए ये बड़ा नो बॉल ये As things stand, Shahroz Bhatti bowled his last delivery of his over. A very, very fine over by Shahroz Bhatti, just giving away 4 runs. Well, things looking very one-sided at EME, but Also in at Green Green Acres. Afar Azad just gave away 20 runs. Stepped up. Afar Azad just gave away 20 runs in the power series over. And he is proving to everyone out there that he is no less than his older brother, the one and only Afar Raza. Faraz Mirza. No, the older brother is Afar Raza. But Faraz Mirza has stepped up big time. Faraz Mirza is giving a statement that he's the new Afar Azad. उसको एक और एलिगेशन था कि ही माइट दोनों भाई जो है ना आपस में थोड़ा सा एक दूसरे को इसे पता चलता है कि इस दफा हाँ, तो और पीटीए करा ली है. फराज अच्छा इसे पता चलता है पीटीए करा ली है इस दफा फराज. I asked him this question कि इस दफा दोनों भाई एक दूसरे को लेवरेज तो नहीं देंगे तो he said नहीं हमारे पे इल्जाम लगता है हम बताएंगे. I'll show you. हम दोनों एक दूसरे को बताएंगे कौन है. तो आप फराज ने अपनी बात पे ही स्टिक टू इट और उसने बताया कि नहीं मैं आफर को नहीं छोड़ूंगा इस दफा. ये भाई वाला जो है ना ये भाई है होगा घर होगा भाई होगा घर होगा. मतलब अगर फ्यूचर में आफर और फराज का मैच हो तो आफर फिर लेके जाएगा. बेशक बाद में घर में जाके आफर उसको घर में घुसने ना दे. तो इसका मतलब है इस दफा को 70-80 हज़ार रुपये जमा करा के आया फराज में से पीटीए का. आखिर बात है. So Akil Butt has come into the attack and he's a very tight bowler. He's lost a bit of pace over the years. He used to be very quick, very nippy. स्ट्रेटजी इस वक्त यही He's होगी कि become बस more of a batsman डॉक्टर now. नूर की विकेट लें और बस गेम फिर उधर टू बेड इजीली. उनकी क्या स्ट्रेटजी है? बोनस बचाएं. यही होगी इस वक्त. बोनस बचाओ घर में बचाओ. बोनस के लिए दे हैव टू स्कोर 141 मतलब के 100 more runs या 80 in 53 बॉल्स. लेकिन मुरली अभी खत्म हो गया. मुरली लेकिन फिर भी इट स्टिल डिपेंड्स ऑन डॉक्टर नूर.
लेकिन मसला ये है कि डॉक्टर नूर अगर 3 ओवर के 2 या 3 ओवर के लिए भी बाहर गए तो वो 2 या 3 ओवर जो है उनको कवर अप करने पड़ेंगे आके. तो ऑब्वियसली थिंग्स नॉट लुकिंग द बेस्ट unless Vakas can obviously bring out some big shots here. Will there be a mix-up? Dr. Noor had almost come down half the wicket. Wanted to take a quick, sneak a quick double. अच्छा वो ये समझ रहे थे कि इमर्जिंग प्लेयर है तो शायद यंग प्लेयर है, लेकिन ये जो इमर्जिंग है ना ये काफ़ी पुराने इमर्ज हुए हुए हैं. तो डॉक्टर नू थॉट के डबल होगी, बट उन्होंने देखा ही नहीं डॉक्टर के साथ. डॉक्टर ने, हाँ उन्होंने बहुत चीखे भी. आप होंगे 40 साल फिट इंसान, लेकिन मैं नहीं हूँ. हाँ, तो अब डॉक्टर ने कहा मैं तो अब सिंगल डॉक्टर नूर भी हमारी ही एज के हैं, तो मुझे पता है बड़े अच्छे से. नहीं, वो हमारी एज के हैं लेकिन वो सुपर फिट है. आकिल बट विद अ वेरी गुड ओवर, सिर्फ 5 रन का ओवर. पिछला शरोज भट्टी ने 4 रन का ओवर. तो डायनामाइट्स गेम तो ले गई ऑलमोस्ट. हाँ ले गई है. यही है ना कि दे हैव टू टारगेट समवन. अब वो अगर शरोज भट्टी को भी 4 रन पे जाने दे रहे हैं. टाइम आउट हो गया है, तो वील कैच यू बैक आफ्टर द ब्रेक. मुरली का रोज
We are back after the strategic timeout. The Gladiators are on 64 for 4 after 10 overs. They need 113 more from 50 deliveries. And Name, do you think there will be a bonus in the other game? I think The we need other to game- focus on that. I need to focus on that. yes, I think so. The bonus is in the cards. 14 runs in 1.4 overs. I think it is doable. बेले आपको मैंने पहले ही कहा था कि ये बोनस पड़ेगा इनको. डार साहब ने बड़ा कुछ कहा था लेकिन मैं वो नेशनल टेलीविजन पे नहीं कह सकता. नहीं, जिस तरह इन्होंने स्टार्ट किया ना, हाशमी आपको पता बड़ी अच्छी फॉर्म में है. आई थिंक फराज ने जिस तरह आज खेला है मैं तो परेशान हो गया. हैरान तो पहले ही था लेकिन अब परेशान नहीं, भी मैं हो गया. आफर फराज के साथ कुछ अरसे से साथ खेल रहा हूँ और आपको पता है दोनों भाई बड़े गेम चेंजर हैं. किसी वक्त भी मैच चेंज कर देते हैं. और अब्दुल्ला हाशमी मेरे साथ खेलता रहा है, तो अब्दुल्ला हाशमी बड़ी अच्छी फॉर्म में है और इनकी बड़ी माशाल्लाह आपको पता है अभी तक नॉट आउट है. आपने देखा है इस तरह आफर है, फराज है, फिर उसके बाद हाशमी है और मेला है. हाँ, तो ये जिस तरह का मैच इन्होंने स्टार्ट किया और बड़ा अच्छा स्कोर, कम स्कोर पर स्ट्रिक्ट किया है, तो काफ़ी चांसेस लग रहे थे कि बोनस पड़ जाएगा इनको. मेला आई गेस पहली बॉल Meanwhile, मेला सिंगल लेगा पहली बॉल Noor पे. and बड़ा Vikas सेंसिबल प्लेयर है Khan, मेला. keep building some sort of innings here for their team. Shahroz Bhatti is the bowler and played back towards the bowler and he'll पहले get मैंने आपको 4 पहले ही कहा runs. था कि उस ग्रुप में मेरी फेवरेट टीम वाइकिंग है और इधर डायनामाइट्स है. लेकिन आज राव की टीम की मैंने बॉलिंग देखी है, बहुत अच्छी बॉलिंग है इनकी और आई एम श्योर कि ये टफ टाइम देगी बाकी टीम्स को. कितना के टफ टाइम लेगी डॉक्टर साहब? मुझे I लगता है guess जब they are मेरे they are ख्याल one से spinner short. मेरे ख्याल से 2 मैचेस जीतने, अगर आप 2 मैच जीत जाते हैं तो क्वालिफाई कर जाते हैं. टिमी ऐसा है क्योंकि आप देखें ना, आज 2 अपसेट हो जाएंगे. वाइकिंग्स ने बोनस ले लिया, इधर से डायनामाइट्स ने बोनस ले लेंगे, तो एक एक मैच और जीत जाएंगे तो आई एम श्योर ये ग्रुप टॉप कर जाएंगे दोनों टीम्स. बोनस लेगी है वाइकिंग्स यार. 4 बॉल. और बड़ी बात है वाइकिंग्स इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट बोनस more लिया. runs and 4 deliveries. बड़ी टीम के अगेंस्ट बोनस लेना बहुत Will बड़ी we अचीवमेंट see है. Hurricanes, the new Pindies? मियां मनान, आफर रजा, the मूसा Amirs. मीर, What is your take on that? बड़े नेम है. Similar kits, similar fates. Because such a डॉक्टर नूर huge बेचारा team. अकेला ही लगा हुआ है. But I think Afar Raza and Mia Manan are capable. वो किसी भी स्टेज पे जो है वो डॉक्टर साहब मुझे comeback लग रहा है कर कि इस सकते हैं तरह tournament में. पार्टी अकेले खेलते हैं ना, वन मैन आर्मी, मुझे लग रहा है इधर भी अकेले खेलेंगे. Big shot, 1 bounce, 4 runs. So these two have started playing some shots here. And will we see the Gladiators make a bit of a comeback? आज हिकमत का बैट डे है. पहली बॉल पे आउट हुआ है, बॉलिंग में भी अच्छा पहली perform बॉल नहीं मुझे कर लगा रहा. बैटिंग ही नहीं आई. नहीं, बोल्ड हुआ है. फर्स्ट बॉल पे कलीम. और इस Bowled. दफा हिकमतुल्लाह खान strikes back, quicker one, and he's gotten rid of Green Vikas Acre- Khan. ये डीएच एएमए की जो विकेट है So ना, a little bit ये of डायनामाइट्स के resistance बॉलर को सपोर्ट comes to an करती है. end. मुरली और हिकमतुल्लाह खान. डार साहब आज माशाल्लाह बहुत खुश है और डार साहब बड़ा अच्छा लग रहा है आपको ऐसे देख के. मुझे भी क्योंकि साल बड़े बाद खुशी सीजन से आपको ऐसे नहीं देखा था लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है आज. पूरे साल बाद खुशी हुई है. इतने खुश आप जो है ना बड़े कम नजर आते हैं, इसलिए मैं चेरिश करना चाहता हूँ इस मोमेंट को. देखिए लास्ट ईयर आपको पता है कि मैं चाहता हूँ मेरी मैं टीम पूरी बड़ी तरीके से एंजॉय थी. करूँ इस मोमेंट को. लास्ट ईयर हम एक भी मैच नहीं जीते थे और टिमी ने हमें ऐसी वो नजर लगाई थी कि आप एक मैच जीतेंगे और वही हुआ. लेकिन इस बार टिमी को आप काफी तो ऐसे उम्मीद कह है रहे कि हैं यार कि से टीमी ने अपना वाटर कूलर खोल के गोते दिए थे आपको. टिमी इस बार काफी टिमी ने हमें काफी हाई होप्स दिए कि केआर अच्छा परफॉर्म करेगी. नहीं नहीं आपकी टीम बहुत सॉलिड है माशाल्लाह इस दफा और वेलकम टू केआर हो चुका है. भाईजान ये 2 महीने गंजे जो मेरा लड़ा ख्याल दी ना पहली आपस में. दफा वेलकम टू केआर हुआ है ठीक से. नहीं माशाल्लाह अच्छी टीम है यार, बस नजर न लगे इसी तरह एक एक करके जीतते जाएं. लेकिन आज के 2 मैचेस में मैं बड़ा मतलब मुझे अपसेट लगे. एक रेडर्स वाला मैच अगेंस्ट लेजेंड्स. बिल्कुल ऑफ कोर्स आई थिंक जैसे हमने टीम्स देखी हैं तो वो उसामा एहसन है, उसामा सोहेल बड़ा अच्छा जेल इन करता है बॉयज़ को और बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहा है टीम को. नहीं नहीं उसामा सोहेल इज़ अ वेरी गुड लीडर, बड़ा डिसेंट गाय है. इसमें कोई शक नहीं है.
So आपको पता है कि Hikmatullah Khan, अक्सर Marwat. अक्सर मैचेस में होता है कि यार कंप्लेन होता है जी कि नो बॉल नहीं दी, रन आउट नहीं दिया, वाइड बॉल थी। तो ये जो सिस्टम इस बार इन्होंने बनाया ना, तो उससे बड़ा हेल्पफुल हो गया दोनों साइड्स के लिए। तो हिकमत around the wicket, loopy delivery और ग्लैडिएटर से बहुत कैप्टन बचे फेस कर रहे हैं batsman. हिकमत को। Awais Khan is the man. So here in the game, Gladiators are 74 for 5 after 12 overs. They still have 8 overs to play and 3 wickets. The bonus equation is that the Dynamites can get a bonus if they restrict the Gladiators below 141. So that is also playing here, and I'm sure that that will be in the minds of the Dynamites to go for the bonus. Akil Butt will be bowling the 13th over. So the batsmen out there, Dr. Noor Dastagir and Awais Khan, taking some quick singles and doubles. So the main, will they be able to save the bonus or? I'll still say that it all depends on Dr. Noor. माइक बंद करा दो. So Akil Butt will be continuing to Awais Khan. Bowls a short delivery and
दो मैसेज commentary कर हो ना So we are pretty much at the end of the game. Zohaib Jawad bowling the over. Mohammad Mohsin and Awais Khan, the last pair after the dismissal of Dr. Noor. Another dot ball, and Dynamites are right there with the bonus win. The Gladiators need to score 141 to restrict the bonus, and they are 60 runs short of the bonus loss. Zohaib Jawad with his very good over, giving away 3 runs. The youngest player of this edition's Premier League. And Shiroz Bhatti is in now to bowl his third over and the game's 15th over with the last pair batting in. So I think lots to learn for Awais Khan and team coming out of this game, and Dynamites pretty much putting up their playing eight exactly as per the requirements, Namir, and they're looking like a side that will certainly go a long way in this tournament. Yes, absolutely. As we predicted, they were very strong on paper and even stronger on the field. A commendable performance. Yeah, I mean, and despite the fact that Umar Dogar and Hikmat could not fire with the bat, so still they put up a great show, and now they're defending the total here. Akil Butt was the one who stepped up to the occasion and got his team out of trouble. Shiroz Bhatti with his third delivery now. Miss hit, just a single. So 84 for 5 and for 6 rather. The last pair is at the crease. And I think the bowling side would certainly be wanting to wrap things up quickly here. And get those vital 2 bonus points. We all know how important they become in the latter part of the tournament. These 2 points are the ones that decide who goes into the knockouts or not. Zohaib Jawad is back in after bowling a beautiful first over. The actual emerging of this tournament. Yes, the true emerging. And the skill, they still require 41 in the last 5 overs to avoid the bonus. That's high up in the air, it will fall in the no man's land. I'm just impressed by the control. This boy is demonstrating out there, and I'm so impressed. He has a bright future, that's for sure. Oh, And a googly and sensational narrowly missing the off stump. So a leg spinner, 2 a leg spinner, Mohsin himself a leg spinner, and 2 emergings going against each other. Oh, what a And delivery this time that he gets is the wicket. to get rid of Mohammad Mohsin. Awais Khan, the captain, is The last man standing. stood alone on that crease. After all of that auction, after all of that effort, the plans, the strategies. Well, it's still the very first game. I think they can bounce back. Yeah, I mean, in the previous tournament as well, in the previous Premier League, they did well towards the end of the tournament. They won a few games. They were able to put their playing eight right,
may make those much needed changes to But the playing eight. I'll still say that in today's game as well, Awais Khan gave a good performance. Good captaincy, good Yeah, bowling. yeah. Uh, the I still experienced feel, players, the expensive players, Yeah, he I picked still couldn't really feel bank. I feel he was short of a player like Ali Sikandar, maybe up top, or maybe a middle order batsman like, I don't know, someone who could obviously take the game away single-handedly. Someone like Umar Azam. Umar Azam or maybe an Umar Dogar. He was obviously short of that one missing link in the middle order. I still have to go through their squad. Maybe there were players, but they weren't available. I don't know. And what a sensational over yet again by Zohaib Jawad. 5 runs given away and taking a wicket as well. So, good performance by the young, emerging, Player, emerging boy. still in his teens. Maybe they should have an under 19 Premier League or under 19 LMS. Under 21. Yeah. But then who would be the one verifying the ages, Namir? Would we need AI? Sharoz Bhatti comes in. Down the ground. Straight into the hands of the The fielder. Dynamites have some depth in their team. They still have Hashim Ghaus, who's an experienced campaigner. He's A proper certainly all-rounder as aggressive batsman, yes, and a great leg spinner as well. Very experienced. Awais Khan running for the couple. And that's good running by the captain. And good fielding by Sharoz Bhatti, sticking his foot out, not worried about injuries. A good shot by Vas. Will he find the boundary? Good fielding there by the youngster. So just a matter of time now, Damir. What do you make of the first day? Well, we have some very valid suggestions coming in, about how to shape our conversation at this time of the day. Yes, absolutely. 'Cause I don't think there's a lot of energy left in neither in this game nor in our voices. It generally happens at this time, at this stage of the But game. then again, there is another game taking place at Green Acres, and I think there'll be a lot to talk about tomorrow. I think when we come in, But we'll have to verify some facts also before yes, talking we'll about have to see what findings we get on our desks before we dig into. the dirt. And I think that is a Big Appeal straightforward Zohaib decision. Jawad has got his man, Awais Khan, and that's the game. A bonus win for the Dynamites. Gladiators are 94 after 17.1. And so a great day of cricket comes to an end here at EME. So I hope all of you enjoyed the first day at the EME Stadium, and we will see you tomorrow with some more exciting games. Good night, Lafis.